Okay, so good morning, everyone. I'm welcome to the session. So let's wait for 5 minutes and then probably we'll start. Wait for 5 minutes so that others join and then let's get started. Okay, so how many have joined? 11 people, including me. Okay, let's wait till 9:15. We will start at 9:15. Let others join.
Okay, let's get started. So today, let's start with our another algorithm, that is KNN. So KNN stands for your K nearest neighbor. K nearest neighbor, where K is number of neighbors. K is number of neighbors. Okay. And again, KNN is your supervised algorithm. It is an example of supervised. So supervised means you will have a target variable and you can do that. You can do the sampling. Okay. Now, let's focus on this word neighbor. Guys, please don't move. So let's focus on this word neighbor. What does neighbor means? Padosi. Okay. Neighbor means padosi. Okay. Very good. Okay. So how do you decide if someone is your neighbor? कैसे पता लगता है if someone is your neighbor? Who lives in our vicinity? Okay, fair enough. Pardon? मेरी स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, तुम सही लिख लो, ठीक है? Someone who lives in your vicinity, what you have said is right. So, or someone who is living close to you, or who is near to you. So basically, if I am using the word close, near, or someone who is living in your vicinity, indirectly, what are you talking about? Indirectly, what is coming in your mind? How would you say that someone is living near to you or close to you or in your vicinity? कैसे पता चलेगा? Distance, yes. Distance. So it means if distance is less, then chances of being neighbor is high. Am I right? Distance agar kam hoga, chances of being neighbor is high. Whether, even if you don't want to think in terms of data science, it's a very simple thing, right? So the person who is just next to you would be your neighbor. Now, so if the distance is less, then chances of being neighbor is high. Now,
let's play a small one. I'll not say game, but suppose karo, if I ask you, who is your nearest neighbor, then what would be your answer? Okay. So nearest neighbor would be Prathamesh. If I ask you who are your two nearest neighbor? मेरे को छोड़ दो. Okay. If I ask you who are your 5 nearest neighbor? If I ask you 10 nearest neighbor, then पूरी class तुम्हारी neighbor हो जाएगी. Suppose करो, if I ask 7 neighbors of India, then I can say 7 neighbors of India can be China, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Burma, Bhutan, right? But if I ask you what are the 15 neighbors of India, तो क्या लगता है इंडिया के 15 नेबर्स कौन से हो सकते हैं? So China, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, then probably Afghanistan can also be neighbor. But since I'm asking you 15, अभी तक count हुआ है 10, you will find 5 more. तो हम बोलेंगे शायद Iran is also my neighbor. If I ask you who are my 30 neighbors, then probably you will say Singapore is also my neighbor or Malaysia is also my neighbor. If I ask you 50 neighbors, then probably UK may also become your neighbor. Are you getting my point? If I keep on increasing the number of neighbors, the person who is very far away will also become your neighbor. इतना आइडिया समझ में आ रहा है? अगर मैं तुमसे बोलूं तुम अपने 100 पड़ोसियों को बताओ, then the person who is living in next building or in next society would also be taken as your neighbor, right? So keep one thing in mind. In KNN, when you are deciding the neighbors, you are not deciding by passing the distance. You are deciding it by passing the value of K. So what is K? K is number of neighbors. So if I say number of neighbors as 50 or 100 or 200, then the person who is living far away would also be your neighbor. Okay. Would also be your neighbor. Okay. Now let's come to this thing. I hope people know how to find the distance. Euclidean distance. Suppose you have few things like your income, you have your savings, you have your returns, and then you have, let me say, net worth. Suppose karo. So let me say income is 10,000, saving is 5,000, returns were 2,000, and net worth was, let's say, 1 lakh. And for another person, it was, let me say, this is person A and this is person B. Okay. Can I find the distance between them? Yes or no? The way you find the distance will still remain the same. Normally, हम distance कैसे निकालते हैं? x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So this formula is used when your data is in 2 dimension. But whether your data is in 2 dimension, 3 dimension, 4 dimension, or 100 dimension, the way you find distance will still remain the same. So I will, first of all, I'll say this minus this whole square plus 5,000 minus 4,000 whole square plus 2,000 minus 3,100 whole square plus 345 minus 101200 whole square, and I'll take the root. So this is how you will find the distance between the 2 points or 2 records, you can say. So I hope people can understand one thing, whether I have 2 column, 3 column, 4 column, 5 column, or n number of columns, the way I find the distance will still remain the same. And this is nothing but your Euclidean distance. जिसको distance नहीं पता था उसके लिए है ये Euclidean distance, and this is also known as your shortest distance.
So basically, KNN would be using the same technique to find your distance. KNN would be using the same technique to find your distance. Any doubt till this point, guys? बताओ. कोई doubt है? कोई question? No. Okay. Now, in KNN, K is a hyperparameter. K is a hyperparameter. What is hyperparameter? Hyperparameter is a parameter which user can control. It means user or the person who is building the model needs to pass the value of K. And I hope people understand one thing, that K has to be an integer. Number of neighbors cannot be in decimal. You cannot have 2.5 neighbors. You cannot have 3.1 neighbors. Neighbors would always be 1, 2, 3, 4 till n. Okay. So K has to be an integer and a positive integer. You cannot have neighbors in minus. You cannot have neighbors in decimals. So K has to be integer. Okay. Now, how KNN actually works? अभी तक KNN हमने start नहीं किया, अब start करने जा रहा हूँ. अब तक सिर्फ ये बताया है what is distance, what is K. How KNN actually works? How KNN actually works? KNN काम कैसे करता है? Probably you can use this algorithm in your life also. How KNN will work. And what would be the impact of neighbors? अगर एक neighbor आता है, उसका क्या impact होता है? Now, normally, how do I build a model? We build a model on the trained data or whichever data you want to take. Let me say, okay. अब ध्यान से देखो सब लोग. So I am saying data on which model is being built. So after building so many models, you guys know that while building the model, you have X and you have your Y. So as of now, I'm saying that your Y is taking two values, either 0 and 1. It can take any number of values. It can be your mobile price prediction. Right? It can take more than two values, 3, 4, 5, whatever. So data on which I'm about to build the model, it contains your 500 records, and X1, X2, X3 are your this thing. So that if you are about to build the model, it means you would be knowing these values. जहाँ पे टिक लगा हुआ है, ये सारे values तो हमें पता होंगे. Even if there were nulls, you would have replaced the nulls or whatever. And all this data, will people agree that all this data would be in numbers? ये सारा data numbers में होगा. Remember, हम numbers में convert करते हैं, model build करते हैं. If you are about to build the model on a data, then you would be knowing your X1, X2, X3, whatever this thing. Now, the value of K is given by the user. Value of the K is given by the user. What is K? Can I have a quick answer, please? Number of neighbors. ठीक है, right answer देना चालू कर दो. Proper answer, technical. K is number of neighbors
or you can say number of nearest neighbor. Number of nearest neighbor. Now, number of nearest neighbor. So this value of k is a hyperparameter user needs to tell. Let me say the value, as of now, user has taken the value of 5. Just this 5 is just a number. You can take 7, you can take 9, 11, whatever. Now, this is, suppose this is your train data. And now comes your test data. सबको समझ में आता है? So remember, when you are doing the prediction, guys, whenever you are using your predict function, you only pass your x. So for person A, you want to do the prediction. So for person A, if you want to do the value and his x3 value, but that would be your question mark because you want to predict that. Is the idea getting clear? Because when you want to do the prediction, you only pass your x, you don't have your y. Even if you have y, it is not used while prediction. Later on, building confusion matter if you are using it. Itna samajh mein aa raha sabko? Again, I repeat, I recapture what I'm trying to do. There is a data which has 500 records. It has 3 x variable, x1, x2, x3. It has a target variable. Target variable takes 0 and 1. Now you want to do the prediction on the person A. You know the x1, x2, x3 values of person A. You want to predict his y value. The value of k is a hyperparameter, and as of now you have taken it as 5. अभी कोई माइंड में ये सोचेगा नहीं कि 5 और 7 हम कैसे डिसाइड करेंगे. I am saying 5, so take it as 5. Later on we will see how to derive it, how to come at, how to decide what would be the value of k. As of now, सब लोग माइंड में रखो. I have taken value of k as 5. Now since I am saying value of k as 5, it means you need to find 5 neighbors. You need to find 5 neighbors of Mr. A. तुम्हें Mr. A के 5 nearest neighbor निकालने हैं. That's the meaning. Now, how can I find? Let me put some numbers. Let me put some numbers so that I can do a small calculation. Let me say the first. Mr. A की भी कुछ values होंगी. Let's say the values of Mr. A was 11, 9, and 30. Can I find the distance between Mr. A and the first record? Answer is yes, I can find. For finding the distance, there is no role of y. For finding the distance, there is no role of y. I repeat, for finding the distance, there is no role of y. So distance कैसे find करेंगे? जैसे अभी find किया इस example में, वैसे ही find करेंगे. So 11 minus 10 whole square plus 9 minus 8 whole square plus 30 minus 20 whole square and पूरे का. So can I find the distance between Mr. A and the first record? Yes or no? Yes. कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? रेज. अगर नहीं आया तो अब आगे की चीजें मुश्किल होने वाली है. अगर आया तो आगे की चीजें बहुत सिंपल हैं. If I can find the distance between Mr. A and the first record, then similarly I can find the distance between A and the second record, A and the third record, A and the fourth record, and it will continue till your A and the 500th record. Net is gone? नहीं, मेरे में तो आ रहा है. बाकी लोगों का तो वॉइस काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है. वॉइस ब्रेक हो रही है? से बता रहे. Okay. I can check net at my connected तो है. Seems to be connected. ठीक है. So again, let me take 2 steps back. अगर voice break हुई थी. See, basically, for all these 500 records, you have the actual numbers. For Mr. A, would also be having your x1, x2, x3 values. You don't know his y value. So what I can do, I can find a distance between A and
of first record and x1 of record A, and I'll subtract them and do the square, right? So this is how you will find a distance between A and the first record. If I can find a distance between A and the first record, then I can find a distance between A and the second record, A and the third record, A and the fourth record. So at the end, how many distances I will have? I will have 500 distances. 500 distances aa jayenge. If I have 500 distances, then can I select the 5 least distances? I can select 5 least distances. Now these 5 least distances would be neighbor of Mr. A. Distance कम होगा तो neighbor होने की probability ज़्यादा है. So I can find the distance of all the 500 people in comparison to Mr. A. Select the 5 least distances and those would be neighbors of Mr. A. Now, while finding the distance, was there any role of 0 and 1? Was there any role of y variable? क्या y का कोई रोल था? एक बार जोर से बोलो हाँ या ना. नहीं था. अब आने वाला है. While finding a distance, there was no role of target variable. Distance was found using only your x variable. इतना याद रखना है हमें. ठीक है? But for these 5 person, from where will these 5 person come? These 5 person will come from these 500 records. And for these 5 person, you also know your target variable. उन 5 का हमें target variable पता होगा. So out of these 5 people, check the status of y variable. Now again the same concept of random forest will come. Voting का concept आ जाएगा. Out of these 5 out of these 5, if 3 or more are marked No, Kasha की मैसेज डाल देता हूँ. Okay. So out of these 5 people, if 3 or more belong to class 0, then A would also be marked under class 0. If 3 or more belong to class 1, A would also be marked under your class. Is the idea getting clear? How KNN actually works. Can I? स्क्रीन नहीं दिख रहा. ठीक है. So basically for person A, you will find all the neighbors. Select the least 5 or least 7, whatever may be the value of K.
and check what is the status of your target variable. It will always select. Yes. So how would you find the neighbors? Neighbor would be a person who is having a least distance. इसलिए तो पहले इंडिया वाला गेम खिलाया था. Can I erase it? No. Okay. अब आते हैं जरा KNN में थोड़ा डेप्थ में जाते हैं. KNN. So basically there are how to find value of K in KNN. इसको please clearly याद रखना. How to find the value of K in KNN. How to find the value of K in KNN. Because अभी थोड़े देर में K means आएगा. थोड़े देर में means let me say after 5 to 6 class तब तुम इसका K उसके K में डाल दोगे. ठीक है. कुछ अलग खिचड़ी बनाओगे. ठीक है. क्योंकि हिस्ट्री यही कहती है, जिसने बोला स्लोप इज इक्वल टू डिस्टेंस, उसके लिए तो मैं बहुत ही वैलिड हूँ. ठीक है. एक जगह KNN आ रहा है, बाद में आएगा K मीन्स, उसमें भी वैल्यू ऑफ K निकालना होता है. बट KNN इज योर सुपरवाइज, K मीन्स इज अनसुपरवाइज. ठीक है. सो प्लीज बी वेरी क्लियर, वेरी मच क्लियर. ओके. एनीवे देयर वुड बी अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 classes before we discuss K means. So how to find the value of K in KNN? And I am saying that K is a hyperparameter. K is a hyperparameter user needs to find or define. Okay. Acha, tell me one thing. After seeing how your KNN actually works, do you guys agree that value of K will impact the final outcome? Value of K will impact the final outcome. So what do you think? K की value कितनी होनी चाहिए? 0. जीरो से तो ऑब्वियसली ऊपर होगी. कैसी बातें कर रही है वैष्णवी? जीरो से तो ऊपर ही होगी. You will have at least 1 neighbor or 2 neighbor. See, basically my question was something different. See, if you want to find the value of K, will people agree that value of K should not be very less? Should not be very less. ऐसा क्यों? Because sample size should never be very less. Just because तुम्हारे बाजू वाला पर्सन बहुत अच्छा पढ़ने है, उसके अंदर ये नहीं कि तुम भी अच्छे हो गए. या तुम्हारा एक पड़ोसी खराब है तो उसके अंदर तुम भी खराब हो गए. लेकिन अगर तुम्हारे बहुत सारे पड़ोसी खराब हैं तो तुम्हारे खराब होने के चांसेस ज्यादा है. Do you agree to this point? And just because your one neighbor is good, it doesn't mean that you are good. But अगर सारे के सारे अच्छे हैं, then chances of you being good will keep on increasing. Otherwise तुम्हारे से नहीं भाग जाते. So one thing is for sure that value of K should not be very less. So try avoiding value of K as 1, 2, 3, 4, 5 kind of thing. Try avoiding all these values because the value of K should never be very less, because then your decision would be highly biased. And remember one thing more. Suppose if K is equal to 1, suppose करो तुमने K equal to 1 ले लिया. ठीक है. Suppose करो K equal to तुमने 1 ले लिया. So do you notice one thing that in real life, अब ध्यान से सुनना, in real life when you are using it in real time, new data will keep on coming. New data will keep on coming. So let me plot few points. Okay. And consider you wanted to do the prediction of Mr. A. ये Mr. A हो गया. Suppose करो, right? Then this Mr. B was the nearest neighbor to him. Correct. But with time, the data changes. And let me say the Mr. B was belonging to class 1. Then Mr. A was also belonging to class 1 because you are taking the value of KS1. But let me say with time, new data comes.
and person C lands over here, and person C belongs to class 0. So now A would be marked to class 0. So do you notice if the value of K is very less, then your model is very random. A slight change in the data will result in huge change in your model. जैसे ही एक भी neighbor change होगा, the chances is that it will bring impact on your final outcome. So the value of K being very less to out rule ही कर दो, because K less means you are judging the person based upon very few neighbors, which is not a good thing to do. ठीक है? Just because तुम्हारे बाजू में एक अमीर आदमी रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अमीर हो. बट अगर 100 के 100 अमीर हैं, इट मींस तुम भी अमीर होगे, अदरवाइज तुम वहां पे फ्लैट नहीं खरीद पाते. ठीक है? नाउ सो इट मींस value of K should not be very less, susceptible to huge amount of changes or randomness. Okay, so K की वैल्यू कम वाली तो रूल आउट कर दी, बट द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ K. K की वैल्यू फिर निकालें कैसे? कम नहीं होनी चाहिए, पर ज्यादा में कितनी ज्यादा हो? 5 हो, 10 हो, 15 हो, 17 हो, 20 हो, 30 हो. अच्छा, एक काम करो, do one thing, गूगल पे जाओ and write the same question, how to find the value of K in K. और देखो गूगल क्या बोलता है. स्क्वायर रूट ऑफ n/2. अच्छा, और कुछ बोलता है? सर एफ स्क्वायर के लिए बोल रहा है ये. ठीक है, वो सपोज करो K इज इक्वल टू n/2. हमने जो एग्जांपल लिया था, हमने 500 रिकॉर्ड्स लिए थे, तो इसका रूट क्या हो जाएगा? 500 का रूट क्या हो जाएगा? 10 का रूट इज 10, 5 का रूट इज 2 पॉइंट सम, तो अराउंड 2.24 नेबर्स आ जाएगा, अराउंड 24. बट लेट मी से द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 5000 और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 50,000 और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 5 लाख. तब क्या होगा? 5 लाख का रूट क्या होगा जब निकालेगा कोई? np.sqrt करो 5 लाख. सेवन 707. हाँ चलो पॉइंट हटा देते हैं. 707 इतने नेबर्स चाहिए क्या? डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी बिग नंबर? बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है, सो इसका कोई ढंग का आंसर है ही नहीं. बट आई विल टेल यू वन मेथड विच जो मैंने निकाला है एंड आई हैव बीन यूजिंग. अब तो खैर इसको गूगल पर डाल सकता है, तो बहुत यूज हो गया होगा. व्हाट आई विल डू इज आई विल डू अ ट्रेड ऑफ. तुम इसका एक वीडियो पढ़ा हुआ देख सकते हो. आई विल डू अ ट्रेड ऑफ बिटवीन accuracy and stability. I'll do a trade-off between accuracy and stability. Now, before I move into what is this trade-off between accuracy and stability, so keep one thing in mind. Whenever you are building any model, there are two major aims. One is your high performance, and another is your stability. Stable भी होना चाहिए मॉडल. Stable means when the new data comes, it should not start to give some random result. नए डेटा पे भी काम करना चाहिए. ठीक है? Stability, high performance and the stability. High performance you can measure based upon your accuracy or whatever accuracy precision जो भी तुम्हें चाहिए उसके बेसिस पे कर लो. And stability. ठीक है? So what I'm doing is I'm saying a trade-off between accuracy and a stability. What does this mean? This means that you can choose a little less accurate model.
little less accurate model, but more stable model. Little less accurate model, but more stable model. I can trust my model. Agar model stable hai, I can trust my model. Whenever I'm using it for real life, and whatever accuracy I get, I can still rely on that, right? Choose a little less, but more stable model. So what basically I'll do, I will use my graph. On x-axis, I'll take the value of k. On y-axis, I'll take the value of accuracy. So just for example, let me say the value of k starting from 1, then it is 2, it is 3, 4, and it is going, let me say this is your 20, this is your 30, this is your 40. And it goes on till, let me say, 50 or 60. Okay. On y-axis, I am plotting the accuracy. So accuracy will start from 0 to 100 in terms of percentage. Barabar? Now, for each value of k, what I'll do, I'll build a model. Ajay, remember one thing, just now in this example, do you notice if the value of k is very less, the model would be unstable? जैसे ही कोई नया neighbor आएगा, the chances is that your predictions will change. जो prediction पहले 0 में था, हो सकता है 1 में हो जाए, right? So when the value of k is less, accuracy may be very high. Let me say this was 70, this was 80, and then 90, and then 100. So कुछ ऐसा हो सकता है, let me say. Now let's just for a comparison, let's take few points. Let me say take point A, point B, point C, point D. So in this region, guys, do you notice ये वाला जो region है जिसको मैं red में mark कर रहा हूँ, do you notice model is very unstable? Unstable, it means the accuracy is either going up or down. So on x-axis you are having the value of k. जैसे ही तुम k को change करो, accuracy is fluctuating. If it is fluctuating, it is mean unstable. When you are changing the value of k, the accuracy is fluctuating. But check in this region, which I'm marking in green. In this region, k is changing, but accuracy is same. Now let me say the value of D. At point D, the k was, let me say 20, and accuracy was 80. At point number C, let me say, at point number C, accuracy was 83 and k was, let me say, 18. So better is that you take k as 20, or even if you take k as 21, 22, 23, the accuracy still remains the same. Let me say at point D, के बाद point E आया. Point E value was 35. Let me say at point E the value was 35. At point D the value was 20. So do you notice even if you change the value between from your 20 to 10, from 20 to 35, the accuracy still remains the same. The k changes, but accuracy still remains the same. So if you compare your region, DE region with your region of your B or C or A, do you notice slightly less, but then model is much more stable. So वो बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. So what I have done a small compromise on the accuracy, but I am choosing the value where my model is more stable. So if model is more stable, even when the new data comes, the chances of model changing or model giving different result would be reduced. ठीक है, ऐसा ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे. ठीक है. So basically you can choose your accuracy versus stability.
समझ में आ रहा है सबको? So basically you can choose a model which is little bit less accurate but more stable. इतना याद रखो, एक ऐसे मॉडल का क्या फायदा है जो अनस्टेबल, जब जब डेटा चेंज हो रहा है स्लाइटली, स्लाइट चेंज इज आल्सो ब्रिंगिंग ह्यूज रिजल्ट, ह्यूज चेंजेस इन योर फाइनल प्रेडिक्शन. आई डोंट वांट दैट टाइप ऑफ मॉडल. अच्छा, ये तो हो गई एक बात. नाउ कैन आई रिमूव दिस थिंग गाइस? यस. डोंट वरी अबाउट दिस ग्राफ. ये ग्राफ हम लोग अगले 15 मिनट में क्रिएट भी करने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट दिस ग्राफ. नाउ drawback of KNN. Now this drawback of KNN normally तुम्हें कहीं पता नहीं चलेगा. No one will ever talk about this drawback. ठीक है? But if when you are using KNN in your real life, तुम्हें पता होना चाहिए कि KNN का प्रॉब्लम क्या है. ठीक है? So where would you use KNN? इसका आंसर मैं तुम्हें दे देता हूं. Normally you should avoid KNN. वैसे मेरा जीवन तो KNN में बीत रहा है. ठीक है? बट तुम लोग को अवॉइड करना है. ठीक है? बिकॉज वहां पे कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं. नॉर्मली तुम्हें KNN को अवॉइड करना है. KNN का यूज कब करोगे? करने को तो कहीं भी कर लो. It will support, it will give you very good answers also, but it comes with its own drawback. So I'm saying normally to avoid KNN, it doesn't mean that KNN will not give you good performance. It can give you very good performance, but still there is one subtle drawback due to which you should avoid KNN. So KNN हम यूज कहाँ पे करेंगे? अगर तुम्हारे सुपरवाइजर ने बोला हमें KNN चाहिए तो KNN डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है. उसको अगर KNN का ड्रॉबैक नहीं पता है तो मैं भी बताने की जरूरत नहीं है. गो अहेड एंड यूज इट. अगर तुम कोई हैकाथॉन में जा रहे हो तो यूज कर लो, तो प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? यूज इट. इफ यू गेट गुड रिजल्ट, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम. बट नाउ कम्स टू द ड्रॉबैक ऑफ KNN. व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ KNN? So the major drawback of KNN is that it is a non-parametric algorithm. ये एक नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिथम है. ठीक है? इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिथम. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पैरामेट्रिक एल्गोरिथम? Parametric algorithm is an algorithm where you are making some assumptions and कभी मेरे मुंह से ये चीज सुनी तुमने? Whenever you are doing the hypothesis testing, तो तुम टेस्टिंग किस पे करते थे? नहीं. टेस्टिंग वाज डन ऑन सैंपल. टेस्टिंग तो सैंपल पे करते थे, बट कंक्लूजन और द इंटरप्रिटेशन वाज ऑन पॉपुलेशन. कंक्लूजन और द इंटरप्रिटेशन वाज ऑन पॉपुलेशन. इफ दिस इज पॉसिबल देन प्रोबब्ली इट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट. तुमने सैंपल पे जो करा, तुमने 12 आम में से एक आम खाया और बोला कि बाकी 12 आम भी अच्छे हैं, then it is a parametric testing because you are doing testing on a sample, conclusion on the population. But if this is not possible, so testing obviously you will do on sample only, but if you cannot make conclusion on the population, then it is not a parametric testing. ऐसी टेस्टिंग का क्या फायदा जिसमें तुम कंक्लूजन पॉपुलेशन पे ना कर पाओ? Correct? So testing was done on sample, but conclusion was made on population. Suppose करो तुम्हें 12 आम खरीदने थे, तुमने एक मैंगो ईट करा and you are not able to make the conclusion on 12 mangoes, तो तुम्हारे आम खाने का क्या फायदा? Suppose करो दो वेंडर थे, वेंडर ए एंड वेंडर बी. तुमने वेंडर ए से एक आम खा लिया, बट तुम्हें कंक्लूजन वेंडर बी पे करना है, तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, जब तक वेंडर बी के ठेले से एक आम ना खा लो.
Are you getting the point? So you are doing testing on a sample, and if you are able to do the conclusion on population, it is parametric. But if you are not able to do that thing, then it is non-parametric testing. So basically, and if it is a non-parametric testing, then this is not a very good form of testing, a good form of good algorithm, whatever. अब ये जो है KNN is your non-parametric. कोई सोच सकता है कैसे है non-parametric? We don't know about. More variation. मतलब तुम अपना स्टेटमेंट रिपीट करो. Mm-hmm. Hmm? How can we get the ओके ठीक है चलो इस बार ऐसा लग रहा है थोड़ा दिमाग लगाया गया बट ठीक है whatever you guys are saying is not wrong but probably थोड़ा सा और explanation चाहिए था. Now see guys, before I explain why KNN is non-parametric and what is the disadvantage of KNN, एक simple सी equation देखो. Suppose you are building the linear regression. Now remember that day when we build our first linear regression model. So after building a first linear regression, after building your model, you would be beta 1 x1 plus beta 2 x2. Let me say there are only two x variables. So after your model is built, after the model is built on trained data or whichever data, I would be knowing the values of beta naught, beta 1 and beta 2. Model build होने के आपको पता चल जाएगा ना. Before building the model, beta naught, beta 1, beta 2 would be question mark. But after you have built the model, you know the values of beta naught, beta 1, beta 2. Suppose just for a talking purpose, मैंने कुछ numbers डाल दिए 2, 3.5 and let me say 4.7 or whatever. Now, if I want to do the prediction, so suppose after building the model, you know the values of beta naught, beta 1, beta 2. So even if you lose this trained data, ये trained data तुम्हारा अगर finish भी हो जाए, गायब भी हो जाए, still you can do the prediction. हाँ या ना? Remember मैंने manual prediction करके दिखाया था, values को multiply करके दिखाया था, right? So even if you lose the data on which you have built the model, you can still do the prediction because you already know the values of beta naught, beta 1 and beta 2. Now let's say you want to do the prediction. You want to do the prediction on next record, on new record, let me say. So whenever you want to do the prediction, you would be knowing your value of x1, x2. You would be knowing your value of x1, x2. Only thing is the y value would be question mark. इस पे question mark होगा, ये दोनों values तो पता ही होंगे. Suppose करो x1 was 10 and x2 was 12. I can still do the prediction of y. How I would do? I will say 2 plus 3.5 into 10 plus 4.7 into 12. And this would be nothing but answer to this question. बराबर? ऐसा ही करते हैं ना? So do you notice in linear regression or in logistic regression also or in your decision tree? In decision tree, once you have the tree, using this tree, I can do the prediction. Correct? So basically, do you notice one thing? Whether it is linear, logistic, decision tree, random forest, once you have built the model, जब तुमने एक बार मॉडल को क्रिएट कर लिया, then relation between x and y has been built. Relation between x and y is being built, or you can say equation between x and y has been built.
x एंड y के बीच की इक्वेशन तुम्हें आ गई है. नाउ यू गिव द वैल्यू ऑफ x, यू गेट द वैल्यू ऑफ y. बट क्या KNN में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. In KNN, you can never build the relationship between your x and y. In KNN, you can never build the relationship between your x and y. How? फिर से देखो जो मैंने बोला है. So in your linear logistic whatever, once you have built the model, you have established the relationship between your x and y. You pass the value of x and you get the value of y. But now again come to this KNN. In KNN, let me take this very same example which I have taken. So it was having 500 records. This was your x1, x2, x3, and this was your y. Okay. When you were doing a prediction for Mr. A, so you were knowing all these things, then this was the question mark. So तुमने Mr. A के लिए जो करा, वही same thing when you are going to do the prediction for Mr. B, the same thing has to be repeated. क्या कोई relation तुम्हारे पास है that you can put it back in the equation? Are you able to build any kind of equation? No, you are not able to build any kind of equation. So whenever you want to do the prediction for any person, you need to look into the entire data. So you cannot build any relationship, and that relationship you can use later on for your prediction. कोई equation बनती ही नहीं आती कभी. So for example, in linear regression, you had a equation of y is equal to mx plus c, or I'll not say y is equal to x plus c, but y is equal to beta naught plus beta 1 x1. And similarly, in logistic also, you had a similar y is equal to beta naught plus beta 1 x1. Linear logistic equation तो same ही होती है, ठीक है? And then in decision tree, you had your trees. In random forest, you had number of trees. So basically, you are able to build the relationship. So now this is the biggest drawback of your KNN. It is a non-parametric algorithm. So whatever you are doing on record B, you have to do the same thing on record A, same thing on record C. So every time you need to scan entire data. You need to find the number of neighbors, you need to check, and then probably need to decide. So अगर ये data तुमसे खो जाए, suppose करो this train data, if you lose this train data, then can you do the prediction on A? You cannot do. If you lose this train data, can you do prediction on B? Answer is again no. Because every time when you need to find the neighbor, you need to establish the new neighbors. इतना समझ में आ रहा है? So normally KNN needs to be avoided because ये non-parametric है. कोडिंग कर लें? कोडिंग इज वेरी सिंपल, मेरी जरूरत है ही नहीं. Okay, let's do one thing. Guys, open your Jupyter notebook and take your CTG data. And let's build a model on this. CTG ले लो, simple सा है.
So data read column. This data set already people are aware with, right? Okay. So from sklearn dot model selection, train test split. Then what I can do, I can say CTG. अभी के लिए सब लोग CTG लेंगे, बाद में चेंज करेंगे. We'll take one more data set. We'll practice on it. CTG, and let me say train and CTG test. If you guys already have done all this thing, please copy paste your code. I'm not saying that you again run it. जिन्होंने नहीं किया है वो लोग कर लें. So I want to select 0.12. Train हो गया. डाल दो इधर this. LEAR from sklearn dot neighbors. अरे यार आजा भाई. Import KNN, K neighbors classifier transformer concept. Nearest neighbor K neighbors classifier. Okay, KNN is equal to. Oh भाई. Okay. सब लोग सिर्फ लाइन नंबर 632 तक रन करेंगे और वेट करेंगे. Once everyone is done, then we'll move it. Just wait. कोई अभी फिट प्रोटेक्ट रन नहीं करना. Just wait. Run till this line. किस किसका हो गया यहाँ तक? हो गया? Okay. Okay. So there are few who are still going. Just run till this line, line number 632, and wait. Done. Can we move ahead? Okay. So over here, basically, I wanted to discuss this hyperparameter. So it says n neighbors equal to 5. This is nothing but your value of k. Remember? So if you don't give anything, it will take default as 5 neighbors. Change. If you want, you can change it. Let me say change it to 7 or 6. Normally try taking an odd number. Okay. Normally try taking an odd number so that you don't get even answers. So if you want, you can take it as 7, 11, whatever, or 9. Okay. So as of now, I'm just changing it to 7. Okay. So it means for each thing, it will find your 7 neighbors. Now everything will remain the same, the way you have been using your fit function. So what I can do, I can CTG X, CTG train X, comma CTG train Y. Model build, if you want to do the prediction, predict CTG, and let me say KNN. So I'll say KNN dot predict. And we know that while doing the prediction, I only need my test data. Prediction done. If you want to build confusion matrix, build your confusion matrix. Matrix import. अरे बाबा भाई नहीं चाहिए इतना बड़ा. But
import your confusion matrix, tab CTG, KNN. से confusion matrix कैसे चाहिए तुम लोग को? कैसे चाहिए? So actual and okay. Now, do you notice, guys? This is tab CTG KNN 3069446240269. This is how your confusion matrix looks like. So if I change the value of K, model will keep on changing. Let me say I change it to 11. Every time you change the value of K, the model seems to be changing. अगर 1 डाल दें तो क्या होगा? काफी अच्छी हो जाती है. So guys, एक सेकंड देख रहे हैं यहाँ पे. See, just take a mental note. And so do you notice the matrix over here? ठीक है. एक काम करते हैं, इसको जरा सा कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं. ठीक है. And if I now I'm going to change the value as 2. Do you notice the numbers change very fast? पहले 284 था, 305 हो गया, 43 का 27 हो गया, 26 का 19 हो गया. Why? Because the value of K is very less. When the value of K is less, as soon as you change the value of K, your neighbors will change or new neighbors will come in. So model is very random. Can you notice? Suppose करो, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार. ये 2 के लिए था. And it is just for your interpretation. You guys don't need to do. Suppose मैं 3 के लिए करता हूं. अब देखते हैं क्या होता है. 3 के लिए क्या हो गया? देख रहे हो, वापस चेंज हो गया. Compare this one with this one. From 305 it has changed to 287, and all the numbers are changing very fast. But if you take the value of K as little high, you will see that changes may come, but they will not be that fast. Suppose करो हम कोई एक लेते हैं. Let me say if I take it as 21. Now let me see what is the matrix as 20 at 21. At 21, this is the matrix. ये 21 के लिए. Let me say. Now let me take it at 23. देखते हैं क्या होता है. देखते हैं कहाँ पे स्टेबल होता है. So it is 314. देख रहे हो, 21 के लिए इतना था, 23 के लिए इतना है. ऑलमोस्ट स्टेबल होता हुआ दिख रहा है मॉडल. ठीक है ना? बिकॉज जब तुम ज्यादा नेबर्स से कंपेयर करोगे तो कोई एक न्यू नेबर भी आएगा तो उसका इम्पैक्ट लिमिटेड होगा, राइट? बट इफ यू आर मेजरिंग ऑन अ वेरी स्मॉल नेबर्स, just one change may also bring a huge change in your final outcome. ठीक है? Now, basically what I need to do is I don't need to run this thing manually. What I'll do, I'll put it in a for loop. एक for loop में डाल देंगे. Possible है? The problem of imbalance can be there.
The data is imbalanced, you can do balancing. Balancing करनी है, चलो कर लेते हैं balancing. ठीक है, balancing part मैंने इसलिए नहीं लिया because मैंने already बता रखा है. But if you want to do your data balancing, let's do one thing. Let's add one line over here. So what I'll do, I'll say df1 equal to ctg train and ctg train dot nsp. Which class is imbalanced? Class 3 is imbalanced. Class 3 के records कम है. nsp equal to 3. और let me say इसका नाम df3 कर देते हैं भाई. ठीक है. So in df3 I'm having all those records which are belonging to class 3. And similarly, if you want, you can say df2. Then what do I want to do? Please go on mute. ctg train equal to ctg, I'll say pd.concat. Concat किसमें करना? This df3 के classes को 2-3 बार बढ़ा देते हैं and df2 को एक बार बढ़ा देते हैं. यहां से रन कर लेते हैं. Model seems to be improving. यहाँ 23 की जगह बहुत बड़ा नंबर होता है. ठीक है. देखो अब मॉडल सही होता हुआ दिख रहा है. Now it is working good for class 1 also. Correct, guys? So, you want me to explain these two lines or are they clear? Clear है ना? पहले तुमने करा हुआ है, ठीक है ना? So, how many times you want to add df3? That is again your choice. Yeah, depending how much imbalance it is. Okay, now let's come to the last part. How to find K in KNN. How to find K in KNN. And what is the approach I'm going to take? I'm going to take accuracy versus stability. Accuracy versus stability. क्या ये वाला पार्ट लोग अपने से कर सकते हैं? So basically what I'm asking you guys to do is to build the same kind of plot. जो plot हमने अभी discuss किया ना, try building the similar plot which we have just discussed. So for example, this plot I'm asking you to do. ये plot कैसे build करने को बोल रहा हूँ मैं? So basically what I want you guys to do is, आप question ध्यान से सुनो. Build your model 50 times. 50 times with the value of K as 1, 2, 3 till your K equal to 50. For each model, find the accuracy. For each value of K, find the accuracy. And then you do a plot where K is on x-axis and accuracy is on y-axis. Okay. How do I find the accuracy of the model? I hope people understand. How do I find the accuracy of the model? Either you use a scalar or you use your diagonal dot sum divided by this dot sum. And if you want, you can multiply it by 100. ठीक है? Possible है? Actually, it is very simple. जिसके माइंड में आ रहा है ना, हाई ये कैसे होगा?
अपने आइडिया को चेंज करो, सिर्फ एक फॉर लूप में तुम्हें अपना कोड डाल देना है बस। लिस्ट पता है? डू यू नो हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट? एम्प्टी लिस्ट में अपेंड कैसे करते हैं पता है? सपोज करो आई एम जस्ट गिविंग, जस्ट ट्राइंग टू डू हैंड होल्डिंग, लेट मी से L1 इज अ एम्प्टी लिस्ट, ठीक है? L1 क्या है? एम्प्टी लिस्ट है। इफ आई से L1 डॉट अपेंड एंड आई से समथिंग, कुछ भी नंबर डाल दिया मैंने, देन डू यू नोटिस अब L1 में एक वैल्यू आ गई। अपना फॉर लूप एक रन करो फ्रॉम 1 till 50, विद इन फॉर लूप यू बिल्ड योर मॉडल, फाइंड द एक्यूरेसी, append the accuracy in your empty list। तुम्हें मॉडल बिल्ड करना भी आता है, तुम्हें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना भी आता है, तुम्हें फॉर लूप भी आता है। इस बार इन सबको साथ में लाना बस। आई गिव यू 10 मिनट्स, 10:26 हुआ है, 10:36 तक का टाइम दे दो। 5-6 लाइन से ज्यादा बड़ा कोड नहीं है।
तुम्हारे मोबाइल में इतने सारे स्क्रीनशॉट्स। Three more minutes. 5 लाइन के कोड के लिए 10 मिनट, मतलब 2 मिनट में 1 लाइन लिख रहे हो तुम लोग। 30 सेकंड में 1 वर्ड, ऐसा कुछ है। अगर एनालिटिक्स लगे तो। Two more minutes. One more minute.
हो गया? दिखाओ। अच्छा, anyway, time is up. Let's take it up, guys. So basically, I have to build my model 50 times from value of k. So I'll say for k in range 1, 51. From for k in range 1, 51. अगर मैं कुछ ऐसा दे दूं, if I say print k, then it prints the value of k. The value of k starts from 1 and it goes till 50. This is a very simple thing. We have already done this thing. अब करना है क्या? कुछ नहीं करना है. तुम्हें क्या करना था? तुम्हें बस इस लाइन को उठाना था. Which line? Take this line, come back over here, put it over here. Then what you have to do is copy this line, come back over here, put it over here. Then what do you have to do? Take this line, come back over here, put it over here. Then what do you have to do? Take this line, come over here, put it over here. Then before the outside the for loop, what I'll do, I'll say accuracy is equal to empty list. Accuracy equal to empty list. Then what I'll do, I'll say accuracy dot append. Can I find the accuracy? Answer is yes, I can find the accuracy. What I'll do, I will append it. Only change which you have to do is instead of giving a hard coded value, you need to give the dynamic value. Value of k कहां से start होगी? 1 से 50 तक जाएगी. For each value of k, can you notice? If you for a time being, if you ignore the for loop, then it is very simple. You are importing it, building a model, doing the prediction, building a confusion metric, finding the accuracy. बस करना है कैसे रन करना है. And अब अपनी accuracy को चेक कर दो. खत्म. बताओ मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. Now what I'll do is I'll do a plot between accuracy and this thing. So what I'll do is let me create the k values. K values, I'll say equal to list range 1, 51. So what would this k values be? This k values would be nothing but it will be containing numbers from 1 till 50. हमने एक list create कर ली which has this thing. अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है. Import your matplotlib.py plot as plt, and then I'll say plt.plot. So which thing should come on my x-axis? Can I say k value should be there on my x-axis and accuracy on my y-axis? So continuously decrease हो रही है accuracy over here. सबका ग्राफ ऐसा आ रहा है? कैसा आ रहा है? और अभी तो ग्राफ लोगों ने बिल्ड नहीं किया होगा. बिल्ड योर ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल. I think we have done the oversampling ना, इस वजह से शायद थोड़ा सा इशू आ रहा है. Let me do one thing. Let me
ऐसा ग्राफ होगा। So this is not followable. Which list is not followed? नहीं रन तो हो रहा है, क्या दिक्कत है? लिस्ट रेंज 1,51। क्या हुआ? ओवर सैम्पलिंग वाला स्टेप हटाओ। Okay, how many people are getting the plot? प्लॉट किसका नहीं आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रही, स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रही बिकॉज आपने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, आपने सेम नंबर रखा हुआ है। वैल्यू ऑफ के विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट विल गो टिल 51, तो इसको तो चेंज करो। इंस्टेड ऑफ पासिंग अ फिक्स नंबर आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ के एंड रिमूव दिस टू लाइंस। ओवर सैम्पलिंग वाली लाइंस को कमेंट आउट कर दो। केएनएन में ओवर सैम्पलिंग का ज्यादा कोई वैसे भी मतलब नहीं है। कमेंट आउट दीस टू लाइंस and then probably you'll get this type of graph.
क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे ये हो गया छोटा उनको बचपन में ठीक है अभी ये क्या वापस क्या कर रहा हूँ अभी पहले मैं देखता हूँ सबका मॉडल आया है ग्राफ आया अमर तुम तो हीरो लड़के थे क्या आज मैं सोए नहीं हो गया क्या दिक्कत है वैल्यू ऑफ के लिस्ट रेंज 1,51 लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल पाइथन इंस्टॉल है ढंग का इसका तो मैं कोई नहीं कर सकता फिर तो मैं PLT is not defined ये तो तुम अलग टाइप का प्रॉब्लम लेके आ रहे हो रिपोर्ट matplotlib.py plot matplotlib.py.sqlt serial load failed while importing magic the specified model could not be found तुम्हारे ना प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं है इंस्टॉल matplotlib नेट कनेक्शन है
अपने लैपटॉप के साथ कुछ छेड़छाड़ करिए हाल फिलहाल में, कुछ तो करा है, अदरवाइज पहले कैसे प्लॉट हो रहा था। मतलब ग्राफिक्स का एक सॉल्व किया हाँ नहीं आ रहा था एडिटिव के बाद से नहीं हुआ। अब बेंच पे क्यों गए हो तुम लोग। ये प्रॉब्लम हाँ, ये करो फोंडा इंस्टॉल कर लो। हाँ, तो फिर तो तुम्हारा फिर तो एक ही समझ में आ रहा है, तो तुम अपना जूपिटर तो तुम्हें अनाकोंडा पूरा इंस्टॉल ही करना पड़ेगा, तभी कुछ नहीं कर रहा है। पाइथन का तुम्हारे सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट वो घर में जाके करो। ठीक है, अभी के लिए गाइस सब लोग प्लीज इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत टाइम ले गया क्लास में एक छोटे से ग्राफ में। सबको ग्राफ दिख रहा है गाइस? ठीक है, नाउ so basically from this graph, so I have taken value of k from 1 till 50. If you want, you can plot it till 1 till 500 or whatever, that is your choice. But now if you notice that within this region, अगर मैं कुछ एक region लूं, देखो ये वाले region में देख रहे हो मॉडल थोड़ा सा अनस्टेबल है। Unstable means accuracy is moving up and down, whatever. Okay. Always avoid using a low values of k. Do not take the values of k 1, 2, 3, 4, 5. Try avoiding them because we have already discussed if the value of k is low, then what is the problem? Now check this region. ये वाला region को check करो. Let's say region A or let me say region B. Compare it with your region A. So compare it with your this region. Let me say ये वाला region देखो and compare it with your B. At region B, can you notice the accuracy would be somewhere around, if not exactly, it would be somewhere around 81% or 80%, between let me say 80 to 81%, because ये देख रहे हो the range itself is 80.5 to 81, right? So whether you take region B or region A or region C, model may seem to be fluctuating, but in this entire block, guys, do you notice the values are almost stable? अगर फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, 0.5%, बिकॉज ये देखो ये 0.5% में ही फ्लक्चुएट करते हुए दिख रहे हैं, राइट? So when the value of, and if I say the value of k is starting in this region, and let me come till 35. So between your 30 to 35, even if you change the value of k, the accuracy is still fixed. Compared to your point B with your point A. At point A, the accuracy is still changing, but at point B, the accuracy is stable. So at point A, the accuracy is little bit higher. At point B, the accuracy is little bit low. But at point B, stability is more. So you can take any value of k. You can take 30 also, 31 also, 32 also, 33, 34, 35. That is your choice. Between that, the accuracy is little less, but stability is quite high. That is the only method by which you can decide your value of k. Okay. So little less accuracy, but more stability.
Okay, now take your break and कितनी देर का ब्रेक चाहिए? Let's meet at 11:30. ठीक है? So after at 11:30 मैंने एक डेटा सेट दिया है ना एडल्ट KNN. Okay, let's build the model on adult KNN today. साथ में build करते हैं. So I think it will take half an hour, and then from 12 we will move toward the next model. Next model is your naive Bayes. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा. 1:30 तक मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा. तुम लोग घर पे जाके खाना खा सकते हो. ठीक है? तो अभी से नाश्ता करके आ जाओ. ठीक है? On your x-axis, do you notice on my x-axis I have taken the k values, and on y-axis I have taken the accuracy. Accuracy will depend upon k and not the vice versa. So जो चीज depend करती है वो y-axis पे आती है. ठीक है ना? So y depends upon x. ठीक है guys, take your break. Let's meet at 11:30.
मैंने बोला था adult KNN. Okay. वो डेटा सेट मेरे पास है, वो कहीं ना कहीं adult KNN. Okay. ओके चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. बाकी लोग कितनी देर में आएंगे? फाइल रीड किया सबने? तो शेप चेक कर लेते हैं. दिस इज 48,000, so almost 50,000 records. Okay, 15 columns. Run your head function and let's see how does the data looks like. Okay, so basically in this, income is our target variable, correct? So income is our target variable. So less than or greater than 50K, or less than or equal to 50K and then greater than 50K. So shall we convert it into zeros and ones? Adult KNN dot income dot replace, and I'll say less than or equal to 50K. Let's mark it as 0. And greater than 50K, let's mark it as 1, and I'll say in place equal to true. So this has been replaced. Now, if I run this thing, dot value counts, so zeros and ones. So probably little bit of imbalance may be there. Now, what are the other columns? So age, working class, FML, GT, education, educational number, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, hours per week. Are there any nulls, guys, over here? Dot is null. Dot sum. देखिए क्या है भाई? Okay. So let's do one thing. Adult KNN equal to NP dot कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? NP dot replace नहीं. तो हमने क्या चीज मुझे याद नहीं आ रहा. हाँ ये क्या हो गया? डॉट रिप्लेस करें. क्वेश्चन मार्क को क्या करना है? रिप्लेस कॉमा NP dot man, and then let's see this thing. अभी भी रिप्लेस नहीं हुए. क्वेश्चन मार्क NP dot man, क्वेश्चन मार्क्स थे कहीं पे. एक सेकंड, लेट मी जस्ट सी कहाँ पे हैं.
वर्क क्लास में तुम class. बोल रहे हो? एक सेकंड। Occupation में. वर्क क्लास में है वर्क क्लास डॉट str dot contains what question mark। क्या प्रॉब्लम है? नथिंग रिपीटेड पोजीशन 0। अच्छा, एक काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क तो दिख रहा है वर्क क्लास में, बट इसको कैच कैसे करें? क्वेश्चन मार्क np डॉट nan रिप्लेस, नहीं, बात बात वो नहीं है कि वैल्यू काउंट से क्या होगा। वैल्यू काउंट विल ओनली गिव यू द काउंट, राइट? आई वांट over here my aim is stated different. I want to convert question mark to nulls so that I can handle the nulls. So that's what I'm thinking. चैट पे सेंड किया है ad डॉट रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, तो यही तो मैंने भी किया नहीं, या मैंने कुछ अलग किया है? डॉट रिप्लेस, ये सेम चीज तो मैंने भी करी है, ad डॉट रिप्लेस क्वेश्चन मार्क np डॉट man, तो सेम चीज तो मैंने भी करी ना, और have I done anything different? So क्वेश्चन मार्क्स कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? अभी भी जीरोस क्यों दिखा रहा है? किससे? चैट पे डालो देखें, अदरवाइज गूगल की शरण लेनी पड़ेगी। किससे हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है पर मेरे में क्यों नहीं हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है पर मेरे में क्यों नहीं हो रहा? वही तो बात है। क्या क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो पूरे डेटा पे अप्लाई होना चाहिए ना। जो चीज एक कॉलम पे वर्क होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू मी, जितना मुझे पांडास के बारे में पता है, पूरे पे होनी चाहिए। यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? एडी कैनन डॉट रिप्लेस, चलो एक कॉलम पे करके देखते हैं कौन से कॉलम में क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे। वर्क प्लेस में है, चलो उस पर भी तो नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम हो सकता है भाई? कॉमा तो नहीं आना चाहिए बिकॉज हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, कॉमा तो रूल्ड आउट है। क्वेश्चन मार्क को सपोज करो मैं कुछ और डालता हूँ, प्राइवेट से, चलो प्राइवेट डाल देते हैं। इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। एक काम करते हैं, लेट मी रीड माय फाइल वंस अगेन। यहाँ पे कुछ दे देते हैं, लेट मी से टाइम पास, देखते हैं पास से भी टाइम पास हो रहा है। सो टाइम पास को ले रहा है बट नैन को नहीं ले रहा, ऐसा क्यों? वाई?
Okay. For example, let me say, let's do one thing. Which is the most frequent value? Most frequent value private है ना? So यहाँ पे private डाल देते हैं. ठीक है ना? So it will directly take care of your this thing. Let's put the private over here. And what I'll do is I'll read my file once again. Okay. सब कॉलम में प्राइवेट नहीं होगा, बट तुम्हें हर एक कॉलम को देखना पड़ेगा ना. अभी तो मैंने सिर्फ वर्क क्लास में प्राइवेट डाला ना. अभी तो मैंने वर्क, और कौन सा कॉलम है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यार? बट देयर शुड बी सम मेथोडोलॉजी. 1 सेकेंड, कोई तो तरीका होना चाहिए ना. एक सेकंड रुको, लेट मी गो टू द गूगल की शरण में एक बार चले जाते हैं. एक सेकंड, एक सेकंड. कोई छोटा सा पैरामीटर है जो हम मिस करते हैं.
Can. Can. Yes. Okay. Yeah. Yes. Solution is ready. देखो बेसिकली आई थिंक ये regression equal to false यूज करना पड़ेगा इन माई लैपटॉप मेरे वर्जन में जो था. लेट्स डू वन थिंग गाइस. लेट्स रन इट फ्रॉम द टॉप. सो आई एम, आप सब लोग ध्यान से देखो प्लीज. आई एम रनिंग द रीडिंग द फाइल, शेप चेक किया, हेड फंक्शन रन किया, कन्वर्टिंग लेस देन और इक्वल टू करा. देन व्हाट आई एम डूइंग इज लेट मी कमेंट आउट, let me import numpy and let me run this thing. Okay, then let's do one thing. अगर क्वेश्चन मार्क्स नल्स में कन्वर्ट हुए हैं तो मुझे वैल्यूज देखनी चाहिए. अभी भी वैल्यू देख नहीं रहा है यार, बट इस बार ये एरर नहीं दे रहा है, बट रिग्रेशन इक्वल टू फॉल्स. सो एज, तुम लोग के में क्वेश्चन मार्क्स कन्वर्ट होने के बाद दिख रहे हैं? हो रहा है तुम लोग के में? क्वेश्चन मार्क रिग्रेशन इक्वल टू फॉल्स अगर मैं ट्रू डाल दूं, ट्रू एरर आ जाता है. कुछ नया वर्जन आ गया इसमें, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है यार? एक मिनट वापस चेक करना पड़ेगा गूगल में. बट तुम लोग के में हो रहा है राइट? क्या बात है, शिष्य गुरु से आगे निकल गए, अच्छी बात है. क्या प्रॉब्लम हो सकता है भाई? दिस इज द प्रॉब्लम इन डेटा साइंस. कभी कोई चीज चलती है तो कभी कोई चीज नहीं चलती. एक काम करते हैं. हम्म
ओके, एक और लास्ट ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। क्यों नहीं हो रहा है? Okay. Guys, give me last few minutes, है ना? And we'll see. तब तक तुम लोग अपनी कोडिंग करते रहो। So I think there are 3 columns: work, class, occupation, and native country. Correct? जिसमें नल्स हैं। ओके, मेरे को एक मेथड तो मिला है
which is not that good, but still it is working. At least it will tell me which all columns are having nulls. Okay guys, chalo, let's get started. काफी टाइम चला गया यहाँ पे. See, so जिन के लैपटॉप पे क्वेश्चन मार्क इज वर्किंग, दे डोंट नीड टू वरी. जिसके पे नहीं चल रहा है उसके लिए मैंने एक ये कोड दिखा है. So what is this ATNN? It is name of my data frame. Log. I am selecting all the rows and then question mark any. जहां पे भी question mark होगा तो आ जाएगा. So at least I will get an idea which all columns are having question mark. So it tells me that these columns are having question mark. Or if I can just say columns, I will get the name of the columns which are having the question marks. Okay. So these 3 columns are having question marks: work, class, occupation, and native country. So let's handle them. So how to handle them? So what I'll do is ADNN dot. सबको लाइन समझ में आ रही है? 857. If you are in need of this line, then use it. Otherwise, you ignore it. If you are already able to handle the question marks, then there is no problem. Go ahead and use the alternate approach we already have. So what I'll do is I'll say equal to this. And I'll say replace. क्या चीज replace कर दें? Question mark, right? Replace your question mark with what? So replace your question mark with. You want to replace it with private. Private से replace कर लेते हैं. Fair enough. Replace with private. Okay, private को quotes में डाल देंगे. Now, which is the next one? Occupation, right? So ADKNN dot occupation dot value counts. क्या occupation है भाई? बाप रे बाप, इतने सारे occupation. Question mark is on these many. Armed forces तो क्या assume कर लें? क्या प्रोफेशनल स्पेशलिटी assume करना तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा. Let's assume it as other services. Let's assume it as other services. Tech support, private, armed forces, other services, managerial. So what I'll do is I'll copy this thing, put it over here. Occupation, replace it with that. Other service. Next column, native country. Native country तो तुम्हें अमेरिका ही डालना पड़ेगा. अगर नहीं पता कौन से कंट्री का है तो it is best you native country को. अच्छा, native country column name is little funny. So United States, Mexico. So I think best thing would be to assume यूनाइटेड स्टेट, या जिसका कंट्री नहीं पता उसको कुछ नया कंट्री डाल दें. अफगानिस्तान वगैरह डाल दें. कॉन्गो, व्हाटएवर. ओके, टेल मी गाइस, व्हाट शुड बी पुट ओवर हियर? assumption क्या कहता है? ओके, फॉर टाइम बीइंग लेट्स assume it to be अमेरिका. अगर नहीं हमें पता है तो लेट्स गो विद द मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू. ओके, सो नेटिव कंट्री. यूनाइटेड स्टेट्स. वैसे भी पूरी दुनिया में इसी का राज है, बाकी कोई है ही कहाँ. Okay, now I will run this line again 857 and I should get an empty list. So it means there are no more question marks existing in my data. अब क्या करोगे? So now what should we do next, guys?
सैम्पलिंग सीधे नॉन न्यूमेरिक को नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करोगे? हे भगवान, अच्छा तुम हमसे आगे पहुंच गए थे ना, तुमने कन्वर्ट कर लिया होगा। तो बताओ कैसे कन्वर्ट करना चाहते हो दोस्तों? सो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, I will suggest don't use the shortcut of label encoder. Try handling one column at a time. Working class education. So let me say what is the name of my data frame. Name of my data frame is this dot work class equal to le dot fit transform. And इसको convert कर लेते हैं भाई. Okay, next column FNL WGT. तो ठीक है, education. Education में क्या है भाई? ADKNN dot education dot value counts. Yes. So avoid using label encoder on education. This data is not a normal data, it is normal data. So जो चौथी पास है उसको 1 डाल दो. Fifth to they have given the order. They have given the order in education column. Educational number you are saying? Yes. So no. See, I'll tell you one thing, guys. सब लोग please ध्यान से सुनो. First of all, don't mark this as, do not use your label encoder on your education column. ठीक है, जिसने भी यूज किया उसको अपने कोड को हटा दो and again read your file. Why? Because can you notice it is a ordinal data. It is not a nominal. ये male female नहीं, किसी को भी 0 mark कर दिया. The order has to be followed. So if you are saying so preschool, so basically जो preschool या nursery he is kind of uneducated. अंगूठा छाप जिसे कहेंगे, ठीक है ना? So उसको कुछ नहीं आता है. So you take this preschool as 1, or if you take preschool as 0, then 1st to 4th should be your 1, 5th to 6th should be 2, whatever, 9th should 7 to 8 should be this thing. Okay, but this person is saying that education and educational number are representing the same thing. Okay, let's check if that is a point, then your job is very, very easy. Educational number, ये बाप रे बाप, column का number different है. Okay, let's do one thing. Value counts. So seems to be. See, if this educational number is representing your education, then probably you can get rid of this education column. दोनों column same meaning ला रहे हैं, तो education column को हम हटा देंगे बाद में. So you don't even need to convert it. ठीक है? Because इस पे length कितना है? What is the length over here? Length is 16. अगर यहाँ पे भी length 16 आ गई, so probably makes sense. 16. Okay. So basically, drop this column because whatever information this education is giving to me, the same information I'll get from educational number. So ये column को हम हटा देते हैं. Let's drop it right now. So a very good observation, I must say. Very good observation. एक इंसान ने दिमाग लगाया है. ठीक है. So let's get rid of this thing. Dot drop कर देते हैं. Which column do I want to drop? I want to drop the education column. Let's drop this column. Fair enough. Okay, let's drop this column. Do I need to do anything for educational number? Answer is no. It is already in numbers. Marital status. ठीक है, marital status I can take it as a nominal data. ऐसा तो नहीं है कि
person who is married is better than not married or whatever. It is not an ordered data. So let's do one thing. I will say ADKNN marital status equal to this thing LE dot fit transform. Marital status taken care of. Occupation. Occupation को जरा चेक करते हैं भाई ये क्या चीज है. Occupation dot value counts. अरे बाप रे इतने सारे occupation, other service, professional, tech, protective support, private house service, armed force. What do you think? Is it kind of ordinal, nominal? क्या करें? Protective service, private house service, tech support, farming, handlers, cleaners, transport, machine, sales, clerical, managerial, craft repair, profit, specialty, other services, armed forces. So ordering this data again seems to be quite difficult. So let's do one thing. Let's use our label encoder. Occupation taken care of. Now, which is the next column? Next column is relationship. Relationship, I don't think would be an ordinal data. We can directly use our label encoder. ठीक है? Directly use कर लें label encoder. Relationship. Relation कितने type के relationship है भाई? Dot relationship. Dot value counts. Husband not in family, own child, unmarried wife, other relative. अरे बाप रे, बड़ा complicated relation है. ठीक है, इसको जल्दी से convert कर लेते हैं. ठीक है, LE dot fit transform. I don't think relationship we can take it as an ordinal. Whatever may be the relationship, your chances of earning the money should not depend upon it. Race, black and white. Race, कितना type के race दिए मैं? White, black, Asia, Pacific, Islander, American, Indian, Eskimo, other. क्या करें? Label encoder? Label encoder लगा लें? वैसे पता है क्या? Normally white के पैसा कमाने की चांस बहुत ज्यादा होगी compared to black और brown. But थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दुनिया सीधी है. ठीक है? अगर हम अमेरिका वाले होते तो व्हाइट को 1 जरूर दे देते, व्हाइट को सबसे हाईएस्ट रैंकिंग देते. बट सिंस हम इंडिया में रह के मॉडल बिल्ड कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं. क्या प्रॉब्लम भाई? Race taken care of. Then gender. Gender obviously we can just do our fit transform, no problem. Gender column GEN. Fit transform. Gender taken care of. Next column. Capital gain, capital loss, hours per week, native country and income. Native country को हमने ऑलरेडी हैंडल कर लिया, नहीं करा है? एक काम करते हैं. ADKNN dot head. Let's see. So most of the things are okay. So country has to be taken care of. So country again I can use as this thing. It's not an ordinal data. वैसे तुम किसी अमेरिकन से पूछोगे ना, बोलेगा नहीं सबसे पहले हमारा कंट्री. ठीक है, उसको सब चाहिए रहता है, मुझे पता है. LE fit transform. Okay, so taken care of. ये इनकम अभी भी ऐसा क्यों दिख रहा है भाई? इनकम तो हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया था. ओके, मे probably I have not run this code. Sir, there is difference between less than equal to and equal to. See, on the second and third. नहीं, कन्वर्ट हो गया ना.
No, no. Where? No, it is converted na 0101. So I missed running that line. Now what's next? So whole of the data is in numbers. Shall we go ahead with our sampling? sklearn already import कर रखा था, so I'll say k. What is the name of this data? Train test split. Bus. So target variable is at the end, right? So target variable is at the end. So I can say colon and 0 colon minus any other column which you wish to drop, guys. कोई column drop करने का मन है? नेटिव कंट्री ड्रॉप करना चाह रहे हो? अरे क्यों? खुद सोचो। तुम अमेरिका में पैदा हुए तो पैसे कमाने के चांसेस ज्यादा है। डायरेक्टली डॉलर में कमाओगे। ठीक है, यूएस में $50,000 इज अ डिसेंट अमाउंट, बट क्या तुम $50,000 पर एनम कभी इंडिया में कमा सकते हो? कमा सकते हो, बट काफी टाइम लगेगा। ठीक है, कंट्री का तो बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट टाइम विश करना कि तुम यूएस में पैदा हो, फिर खूब मस्ती करना। ना पढ़ाई का बचे ना इसका। 16 साल में माँ बाप घर से निकाल देंगे, अपना थोड़ा पिज्जा पिज्जा में काम करना, 35-40 साल पर डिग्री कर लेना, एक कार तुम्हारे पास होगी ही होगी, घुमाते रहना। गाइस, हैव आई डन एवरीथिंग राइट और कुछ गड़बड़ दिखता है? 0 1 -1 1 सब कुछ सही है? ट्रेन टेस्ट, एनी टाइप एरर फ्रॉम माय साइड? नथिंग। ओके, सो लेट्स बिल्ड अ मॉडल। मॉडल बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाली लाइन को उठा लेते हैं जो पहले थी हमारी। sklearn से तो हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, सीधे यही उठा देते हैं। sklearn से इंपोर्ट तो कर ही चुके हैं। So k neighbors equal to, let me start with, let me take the default value. I'm just creating one instance knn and let me say knn का कुछ नाम डाल देते हैं, adult k, ठीक है ना? And then run your fit function. So data cleaning has taken some time, but then model building, obviously it will not. Model build, let me do the predict, and this time let me do on predict adult. So knn dot adult, देखते भाई कैसा आता है मॉडल। वैसे कैसा आ रहा था, तुम लोगों ने तो बिल्ड किया हुआ है ना? इज इट कमिंग गुड? नॉट दैट गुड। मॉडल बिल्ड tab ad equal to confusion matrix. What do you want? You want actuals on sideways? Predict. देखते भाई कैसा होता है, क्या प्रॉब्लम है? क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स cannot handle mix of multi-class and binary. अच्छा, confusion matrix, okay, so it should be y. ठीक है, टप 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 6828609827। क्लास 1 के लिए फेल होता हुआ दिखता है थोड़ा सा। क्लास 0 के लिए तो बहुत इजी जा रहा है, बट क्लास 1 के लिए इट इज फेलिंग।
और खराब हो रहा है। गरीबी ज्यादा है। हाँ, गरीबी थोड़ी ज्यादा है। चलो इस बार लगता है लेट्स डू आवर ओवर सैम्पलिंग वंस। सो किसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है गाइस, गरीबों का या अमीरों का? लेस देन 50K और व्हाटएवर। गरीबों का ज्यादा है, काफी ज्यादा है, इसलिए मॉडल फेल होता हुआ दिख रहा है। लेट्स डू वन थिंग, df1 equal to df train and I'll say df train dot income equal to 1। अभी बेटर होता हुआ दिख रहा है, बट अब थोड़ा सा क्लास 0 के लिए प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है। हम्म, ये सही आता हुआ दिखता है थोड़ा सा, एटलीस्ट इट इज वर्किंग गुड फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, एक्यूरेसी तो कम हो ही जाएगी, बिकॉज जब तुम 1 के लिए पढ़ाने की कोशिश करोगे तो 0 के लिए खराब होएगा। गाइस इस पे रैंडम फॉरेस्ट बिल्ड करो नेक्स्ट 2 मिनट में। देखो, कंपेयर योर KNN विद रैंडम फॉरेस्ट। डेटा क्लीनिंग सैम्पलिंग इज ऑलरेडी डन, राइट? रैंडम फॉरेस्ट बिल्ड करो, उस पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करो, कंपेयर देम। कंपेयर देम कैसा आ रहा है? अच्छा, केनन के लिए ना सब लोग एक चीज स्टॉप करो, मेरे माइंड में एक छोटी सी लाइन में तुम लोग को बताना भूल गया।
वो लाइन भी तुम्हें नोट करनी है कि केएनएन का जो मेन प्रॉब्लम क्या है. What is the main drawback? Main drawback is that it is a non-parametric. Another thing is KNN is a lazy evaluator. आलसी होता है. ये अभी कोड रन करते करते मेरे को सडनली ध्यान आया. KNN is a lazy evaluator. Lazy means आलसी. इसको नोट डाउन कर लो प्लीज. इट इज अ लेजी evaluator. अच्छा, now tell me one thing, which is the biggest characteristic or the property of a lazy person? अपने अंदर झांक के देखो और बताओ, आलसी लोगों की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? कंज्यूम टाइम. ओके, क्यों कंज्यूम करता है टाइम? जल्दी जल्दी कंज्यूम करने वाले को आलसी थोड़ी ना बोलते हैं, उसको मेहनती बोलेंगे. अच्छा, हम सब ने कभी ना कभी आलस दिखाया होगा, राइट? बताओ क्या होता है? विच इज द बिगेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ लेजी पर्सन? पोस्टपोन करेंगे, बाद में करेंगे. सो लेजी पर्सन की बिगेस्ट क्वालिटी क्या होती है? ही विल डू द वर्क व्हेन नीडेड. जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे. तुम्हारे मन में चल रहा है जब इंटरव्यू की बारी आएगी तब 2 दिन पहले पढ़ लेंगे. यही है, इसी को लेजीनेस कहते हैं, राइट? जब जरूरत पड़ेगी, व्हेन एक्चुअली नीडेड, देन ओनली आई विल डू द वर्क. जब भूख लगेगी तब देखेंगे किचन में कुछ है कि नहीं तो मैगी बना देंगे, वो तो होगी ही. ठीक है. सो द सेम थिंग इज डिनोटेड इन योर KNN, राइट? सो डू यू नोटिस ये प्रॉपर्टी इन अ वे मैंने पहले भी डिस्कस करी हुई है, बट probably I did not use the word lazy. So let's say when you're building your linear or logistic or anything, basically what you can do, you can build a relation. You can build a relation between x and y, correct? X and y के बीच में relation build हो जाती है because you have your equation of your y is equal to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 whatever, right? And then using this relationship you can do the prediction. But KNN cannot do the same thing. For KNN, when you want to do the prediction, then only it is building the model. Itna yaad aa raha hai? When you want to, so why is KNN called a lazy? Because whenever you want to do the prediction, it has to do the entire calculation. It has to do the entire calculation. It has to find all the distances, then sort them, then find the k number of nearest neighbors, and then check your target variable and do the entire thing. It has to do the entire thing for each and every record for which it wants to do the prediction. Because why is KNN lazy? Because model is built when prediction is needed. जब प्रेडिक्शन की बारी आती है तभी वो मॉडल बिल्ड करने जाता है. ये KNN की एक दूसरी होती है. सिंस ये लेजी है, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर. And why it is lazy? Because you cannot establish the relationship between x and y and use that relationship later. Okay, now please go ahead and build your random forest on this data. Build करो और मेरे को बताओ कैसा कंपैरिजन आ रहा है. Somewhat good.
देखो कैसा रहा है। वो आजू बाजू के नेबर को देखकर डिसाइड इट इज नॉट वेरी इन रिलेशन टू द नेक्स्ट नंबर दैट इज व्हाई प्रॉब्ली इट हैज बी अवॉइडेड टिल द टाइम दे आर नॉट रेडी हियर decision treatment for host guys please build this also and see compare the models उससे लॉजिकल डिवीजन बढ़ेगा just a random forest build क्या build का feature important है which is the most important feature जो ये बताता है कि कौन पैसे वाला है कौन गरीब है feature importance is not possible in Kenya it is possible in decision tree and random forest एज एज हो सकती है जैसे से बढ़ती बढ़ता ठीक है मान सकते हैं और इसके बाद एज का डायरेक्ट रिलेटेड है एक 25 साल का और एक 40 साल का और इसी पर वैसे एकदम तो बहुत सारे सब ऑफिस में काम कर रहे हैं अभी अभी अगर खेत बेचा है तो और भी हो सकती है so high amount of randomness is likely there but still let's हर हाईली एजुकेटेड पर्सन जरूरी नहीं ज्यादा कमा रहा हो और हर कम एजुकेटेड पर्सन जरूरी नहीं कि गरीब हो
On this data set, we have built the KNN. I want you guys to build the random forest. I want you to build the decision tree. I want you to build the logistic regression. चारों मॉडल्स को कंपेयर करो और आखिर में मेरे को बताओ कौन सा सबसे अच्छा है. अब रियल डेटा साइंटिस्ट का काम चालू हो रहा है. Create all the 4 models and come up with that answer. Which one is good or which one is the best and why? तुम्हें पता लगाना है कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन सा मॉडल तुम यूज करना चाहोगे. एडियन एंड रैंडम फॉरेस्ट दोनों. I hope it is giving good for both the classes. decision tree का फीचर इंपॉर्टेंस चेक करो. देखो क्या है उसका फीचर इंपॉर्टेंस. अभी अभी किसी से बनाया टॉपिक
Fill your decision tree random forest, all those things, and try. And let me know which one do you agree. Plot one. Okay. Feeling. Guys, do you notice वो marital status को इतनी importance क्यों दे रहा है? ये table जरा देखो जो मैंने create करी देखिए. So what I have done is I have done a PD dot cross tab, marital status and income. Okay. So basically this time I have converted it without into 0 and 1 so that you can understand. So do you notice if a person is divorced, then his chances of earning high amount is less. Greater than 50K, let's say take it as a rich. So out of around 6,000 people or
I'll not say 6,000, but 6,700 people. Around 6,000 are earning less. Marital, यहाँ पे chances of earning are more. ठीक है. Rest everywhere, if you notice this thing. So in this category, ये वाली जो category है ना, married, CIV, spouse, I don't know ये कौन सी category होती है, but so if you are never married, then your chances of earning high amount is very less. So और it could be vice versa, जिसकी इनकम कम होगी उसने कभी शादी करी नहीं होगी. It could be vice versa, but डेटा में ऐसा दिखता है. ठीक है. रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दे रहा है. सो रिलेशनशिप से देख लेते हैं. रिलेशनशिप कर लेते हैं. रिलेशनशिप. Okay. So relationship, husband, not in family, other relative, own child, unmarried, wife. वहां पे भी almost वैसे ही आता हुआ दिख रहा है. So if you are unmarried, chances of earning high is very less. Okay. Not in family, husband. So अगर husband हो तो तुम्हारे chances of earning are much more. ठीक है. Ratio wise I am talking, right? Not in family, other relative. So कौन सी category जहाँ पे, so there is no category which directly gives that chances are high. So wife की chances ज़्यादा है. 1238 and 1093. So if you are a wife, relationship is wife, then chances of earning high is comparatively more. अगर ratio देखोगे तो almost 50-50 आ रहा है. 1238 and 1093 almost 50-50. Anywhere else it is quite less. Other relative 1307 and then husband. So husband and wife सिर्फ यही दो रिलेशन ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे chances of earning are high. बाकी सब में नीचे जा रहा है ratio. And probably that's the reason it is giving you a high this thing. Let's do one thing. Let's build this kind of tabulation for educational number. Educational number का, or let me say with education itself. एजुकेशन का कॉलम था ना. देखें एजुकेशन का क्या रोल है. जस्ट बाय वन टेबल probably I'll get a little rough idea. So देखो दिखता है. If you are masters, then chances of earning high are more. Can you notice? Ratio is more than 50%. अगर 10th pass हो तो can you notice the ratio of 10th pass earning less than and earning greater than is very much different. So out of 1300 or you can say out of 1400 people, 1300 are earning less than 50K. जैसे जैसे तुम्हारी पढ़ाई बढ़ रही है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है. ठीक है. बैचलर्स का I will not say it is 50% but close to 50%. ठीक है. 40% के आसपास आता हुआ दिखता है. And if you are doctorate, then you notice chances of earning more than 50K are much high. So 431 and 163. High school graduate. High school graduate को उसने पता नहीं. High school graduate again. Okay, this is 13,000. Then masters पे again the numbers are increasing. And then preschool, some college. Actually, it is not preschool. It is professional schooling. Prof school, right? प्री स्कूल नहीं है शायद ये प्रोफेशनल. प्री स्कूल ऊपर है ना. So अगर सिर्फ तुम प्री स्कूल हो तो out of 83 people only 1% is earning more than 50K. प्री स्कूल is means this person is illiterate. ठीक है ना. सिर्फ नर्सरी या क्लास प्रेप तक गया था. So probably that could be one reason it is giving importance to education and all those things, right? अब दिखता है एजुकेशन का कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है. ठीक है. ठीक है. So which model should we finalize? कौन सा मॉडल फाइनलाइज कर रहे हैं? रैंडम फॉरेस्ट. डू वन थिंग. यू पुट योर कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर ऑल 4 ऑफ देम. एक ऑर्डर में पुट करो. पहले लॉजिस्टिक का पुट करो. लॉजिस्टिक बनाया है.
पहले लॉजिस्टिक का रखो, फिर डिसीजन ट्री, फिर रैंडम फॉरेस्ट, फिर केएनएन, एंड लेट्स डिस्कस ऑल द 4 कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड कम टू द कंक्लूजन. Put all 4 of them in an order. अब तो डेटा सभी प्रूव हो गया, पढ़ाई लिखाई का फायदा है, थोड़ा पढ़ लो, है ना. कॉपी पेस्ट करो और लिखो मत. ओके, लॉजिस्टिक. नेक्स्ट वन. अरे okay guys, so you have 4 confusion matrix. Thanks Vaishnavi. You have 4 confusion matrix. बताओ कौन सी बढ़िया है, the best कौन सी है? And I think from top you are seeing your predicted values for all of them, and left to right you are seeing your actual, and this is your 0, this is your 1, and this is your 0, this is your 1. कौन सी बेस्ट है? लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, केएनएन. रैंडम फॉरेस्ट सीम्स टू, केएनएन तो आउटवर्डली रिजेक्टेड है. रैंडम फॉरेस्ट seems to be doing pretty good job. Decision tree, logistic, ये दोनों तो फेल कर ही जाते हैं, no doubt in that, because they both are failing for class 1. ठीक है, अब बचता क्या? डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट. सो इसमें भी रैंडम फॉरेस्ट का एडवांटेज तो क्लियर है, ठीक है ना. इफ यू कंपेयर दिस 1455 with 1550, and if you compare this thing 6496 with your 6784, ठीक है ना, एडवांटेज इज क्वाइट क्लियर. सो इस पर रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को अप्लाई करो. ओके, अच्छा, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एल्गोरिथम. नेक्स्ट एल्गोरिथम कौन सा करना है? नाइफ बेस करना है, ठीक है, नाइफ बेस करा देते हैं, जैसा तुम लोग कहो. नेव बाइस, ओके मैम, नेव बाइस कर लीजिए. हम तो क्या है, हम तो तुम लोग जो कहोगे कर देंगे. नेव बाइस, ओके.
बस इसकी थ्योरी बहुत सिंपल है, ज्यादा देर नहीं चलेगी। ओके चलो। So naive Bayes. Or NB. So naive Bayes basically works on your Bayesian theorem. Bayesian theorem सबको पता है ना, क्या होता है? Conditional probability. That's it. अगर conditional probability की चीज याद है तो इस algorithm में कुछ टाइम नहीं लगेगा, otherwise it might take some time. It works on your conditional probability. What is conditional probability? We have already discussed PA by B. What does this mean? This means probability of occurrence of event A when B has already occurred. Probability of occurrence of event A when B has already occurred. Probability of occurrence of event A when B has already occurred. So basically you can say what is the chance that you will earn 50K or more than 50K if you are graduate. What is the chance that you will earn more than or less than 50K if you are 30 years of age? So less than 30 years or more than 30 years of age is a condition. It would be taken as your event B, correct? And what is the chance that you earn more or less would be taken as event A? What is the probability that... What is the probability? Saurabh, Hanve, Dhabane. It is still okay. Fair enough. Till the time it is not making noise, it is understood. So let me say what is the probability you earn more than 50K if you are graduate. Then this you being a graduate would be taken as event B, and greater than 50K would be taken as your event A. Probability of occurrence of event A when B has already occurred. So do you notice one thing, that whenever you are trying to predict something, when you are trying to predict your Y, this Y depends upon your X. As the X will change, the probability of Y will also keep on changing. Whether you belong to class 0 or class 1, it will keep on changing. Because you do not predict Y based upon only one parameter, but on number of parameters. Suppose, if you want to approve the loan, then loan would not be approved only based upon your age or based upon your gender or based upon your income or based upon your loan amount. When you are approving the loan, probably you will consider multiple factors and then only you will take a decision. Right? So that is where your naive Bayes comes into PA by B. What is the formula? P A intersection B upon PP. ये फॉर्मूला सबको याद होता है? PA by B is equal to PA intersection B upon PB. That is the formula of your conditional probability, and exactly same formula is being applied in your naive Bayes. Naive Bayes is nothing but it works on your Bayesian theorem. Bayesian theorem is your conditional probability. ये फॉर्मूला सबको समझता है? अगर समझता है तो मेरे लिए कुछ छोटे से काम कर दो. Are you able to see this data? एक्सेल शीट दिखती है? नहीं दिख रही? अभी दिख जाएगी. अब बताओ, दिखती है? दिख रही है?
जेंडर डिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। नो, द डेटा विच आई हैव टेकन इज सो दैट पीपल कैन इजिली कनेक्ट, ठीक है। सपोज करो मैं इसे ग्रे में मार्क कर देता हूँ, बिट ऑफ ग्रे, ओके। सो यूजिंग दिस डेटा you need to answer the first question. इस वाले क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ मुझे। So can you notice that there are two things, gender equal to male and loan status equal to y, p a by b जैसा दिखता है, probability of occurrence of event a when b has already occurred a by b जैसा दिखता है, gender is male and loan status is y, what would be the value for this one? सिर्फ इस क्वेश्चन को आंसर करो जिसको मैंने एक डिफरेंट कलर में मार्क कर दिया, which I am marking in green. Try answering this question. And hint is you don't need to look anywhere but only in this data. सिर्फ इसी डेटा से आंसर आएगा और कहीं नहीं देखना है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किधर लास्ट कौन सा? हाँ, उसको ए रखो, टेक इट एज ए। कितना? 5/10 तो हाफ फुल कैसे? नॉट अ राइट आंसर। 5/6 कुछ कुछ हो सकता है शायद हो। जेंडर मेल एंड लोन स्टेटस वाई। बहुत पास तक पहुंच गए हो लेकिन भटक गए हो। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? ए इंटरसेक्शन बी वाला, बस वो फॉर्मूला डाल दो और आंसर आ जाएगा। वैष्णवी, तुम चाय पी के आ जाओ। हाउ कैन इट बी 5/3? प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा कैसे हो सकती है? दैट्स द राइट आंसर। 5/7 किसने बोला? हाँ, दैट्स द राइट। 5/7 कैसे आया, अब सिर्फ इतना देखना है। सो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है। हाउ मेनी लोन्स वर अप्रूव्ड? लेट मी मार्क देम इन अ डिफरेंट कलर। इतने लोन अप्रूव हुए थे। हाउ मेनी लोन्स आर अप्रूव्ड? 7 लोन्स आर अप्रूव्ड।
Now within these 7, check how many of them are males. Intersection तो वही होगा ना, ठीक है. I think तुमने सबसे ऊपर वाले मेल को भी काउंट कर लिया था, ठीक है. So answer would be 5 by 7. So नीचे का बेस हो जाएगा 7 and within 7 count how many of them were males. 5 by 7 आ रहा है, at least from this color coding. Now answer the next question. Male and lone status N. How many N's are there? How many N's are there? 3 N's हैं. Let's do a different color code to them. Let's mark them as blue. Out of these 3 which are marked in blue, how many of them are male? Only one of them is male. तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 by 3. Clear है idea? Now answer the next question. Urban and lone status Y. नीचे का base तो same रहेगा, same 7. The base will still remain 7. Within those red, count how many of them are urban. 6 by 7. Pakka? Yes, this time everyone is right. 6 by 7. Answer this one, last one, for practice. Self-employed, yes, and loan status equal to Y. Base will still remain 7. 2 by 7. पक्का? आंखों ने धोखा तो नहीं दिया? Okay, fair enough. Makes sense. 2 by 7. Any doubt? Any question, guys? कैसा निकल रहा है? ठीक है? Now, if this is clear, then let me change the question. What is the random probability loan is approved? What is the random probability? इस बार conditional नहीं random पूछ रहा हूँ. What is the random probability that loan is approved? Seven by 11. Why 7 by 11? Because there are 11 records, and out of those 11, 7 loans have been approved. So the random probability. जिसको random probability से problem आया ना, उसके लिए कुछ ऐसा समझो. देखो. Suppose I'll take a very simple example and try it. It will clear it out. Let me say you are appearing for a job. Government jobs थोड़ी देर के लिए मान लो, and there are 100 vacancies. Reservation वगैरह सब कुछ हटा के 100 vacancies and 10,000 people are applying. Then what is the random probability that you would be selected? So out of random probability you would be selected would be 100 upon 10,000. So, or let me say 1 lakh people are appearing. Okay. So ये दो कट जाएगा. So 1 by 1,000. So only 1 person out of 1,000 would be selected. So ये तुम्हारी random probability हो जाएगी. That would be your 0.001. But why I am calling this to be random? Because you are not considering any other thing. Probabilities. So when you are saying random probability, it means for everyone the probability is same. चाहे person A हो, B हो, C हो, D हो, E हो, सबकी same है probability. But in real life it would not be same. In real life it would not be same. अब हो सकता है A ने थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करी हो तो उसकी चांसेस ज्यादा हो, या B ने ज्यादा पढ़ाई की तो उसकी चांसेस ज्यादा हो. So but as of now, when I am calculating this 0.001, I am not putting any condition.
and that is why I'm calling it to be random. ठीक है ना? इतना सबको समझ में आ रहा है? So when you are saying random, everyone has the same probability, but then everyone would not be having the same probability in real terms. Then you start looking into some predictions. Idea clear है? Now, अब आज तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, सिंपल वाला, जैसा भी किया. मैं तो कभी टफ चीजें बोलता ही नहीं. तुम लोग क्यों हंस रहे हो? कभी कभी टफ हो जाता है. अच्छा अच्छा, नाउ हाउ नाइफ बेस विल वर्क. अभी तक नाइफ बेस एंटर नहीं किया. नाउ आई एम अबाउट टू एंटर नाइफ बेस. हाउ एनबी विल वर्क. अभी तक बैकग्राउंड बिल किया था, विल वर्क. सो बेसिकली हाउ इट विल वर्क, we will find the probability for both the classes, or if you have more than 2 classes, you will find the probability for all the 3 classes or all the 4 classes. We'll find the probability for both the classes, and whichever probability is more, final prediction would be for that class. जिसकी probability ज्यादा होगी, finally तुम वहां पे चले जाओगे. If your probability of your class 0 is more, you will mark to class 0. If the probability for class 1 is more, you will mark to class 1. But do you notice I am saying I will find the probability for both the classes? पहले दोनों की probability निकाल तो लो, फिर compare करें. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to find the probability for both the classes. What are the 2 classes? 2 classes are your n and y. So you can convert it into 0 and 1, but as of now I'm saying probability of class n and probability of class y, just for our talking purpose. Okay, now tell me one thing. Is it guaranteed that if you belong to, if your x variable is something, your loan would always be approved? क्या ऐसी कोई guarantee है क्या? नहीं ना. So for what I'm trying to say is that if your gender is male, your chances of approval may be high, but it is not a guarantee that your loan would always be approved. If your credit history is good, then your chances of approval are high, but it doesn't mean that everyone who has a good credit history, his loan would be approved. Correct? So basically what I can do, I can find the conditional probability. So let's find the conditional probability for class n and class y. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? I will find the random probability. What is a random probability that your loan is rejected? What is a random probability that your loan is rejected? There are 3 loans which have been rejected out of 11. So can I say 3 by 11? What is a random probability that your loan is approved? 7 by 11. ये purposefully A मैंने सिर्फ confuse करने के लिए डाला है. Later on you can ignore it. Now, let me talk about this person. Suppose a person, you want to do the prediction for this first person. Or let me say a person comes, a new person comes, something like this. एक नया person आया, who is male, who has 0 dependent, who is self-employed, his credit history is 1, property area is urban, and you want to do his prediction. Okay, you want to do the prediction for him. So थोड़ी देर के लिए इस person को मान लो Mr. A. You want to do the prediction for Mr. A using your naive Bayes. So first of all, I'll find what is the random probability. But this person has some data also. He is male. So being male or female will either increase this probability or decrease this probability. So what is the chance that if person is male and loan is rejected? Male and loan rejected. Remember, हमने भी 1 by 3 निकाला. Male and loan approved. Male and loan approved. Let me again mark it in red. Male and loan approved. So it is your 5 by 7. Then you will check
this person, Mr. A, has zero dependent. So for zero dependent, your loan can be rejected also and can be approved also. But what is the probability? If you have zero dependent, then what is the probability that your loan is approved and what is the probability that your loan is rejected? So ये देखो 3, 4. फर्स्ट को नहीं काउंट करेंगे ना जब हम y के लिए ले रहे हैं. So it would be 4/7 into नीचे तो 3 आएगा. So zero dependent and loan is rejected. Zero dependent and loan is rejected. This is one entry. So can I say 1/3? Yes or no? Guys, please बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको? Anyone जिसको slide पे doubt है? Everyone is clear? Okay. Now let's take this thing. Person is self-employed and loan is approved. Person is not self-employed and loan is not approved or loan is rejected. So let me take it for person is this thing. No. No. So how many entries do I have? No. अच्छा ये वाला no नहीं आएगा ना? और कोई सा भी आएगा? हाँ ये भी आएगा ना? Right? So self-employed no and your loan is approved. So can I say it is 5/7? Self-employed no and loan is approved. Not approved, loan is rejected भाई. ये देखो. ये देखो. So it would be 3/3, which is nothing but 1. देखो after color coding समझ में आ रहा है? After this red, blue and white का coding के बाद समझ में आ रहा है? Why 3/3? No and loan status no. No and loan status Y. ठीक है? Clear guys? Right? Now let me say credit history. Credit history 1 and loan approved. Credit history 1 and loan approved. This and this. 6/7. Credit history 1 and loan approved. Credit history 1 and loan rejected. Credit history 1 and loan rejected. So it would be 2/3. Now let's check the last thing, property area. Mr. A का property area क्या है? Urban है, so I'll only check for the urban. Urban and loan approved. Urban and loan approved. 6/7. Urban and loan rejected. Only one record. Urban and loan rejected. 1/3. Now the left row will calculate for probability equal to n, and this row will calculate for probability equal to y. Please jaldi se answer nikalo. I want answers in after 3 digits in decimal. 3 digits till decimal. 3 digit after decimal. Sorry. Use your Jupyter notebook. वो ज्यादा अच्छा रहेगा. बाकी जैसी मदद. ऊपर का कितना आ रहा है? 0. पक्का? नीचे 0.13
6. So which probability is more? Probability of y is much more than your probability of n. दिखने में दोनों नंबर्स छोटे हैं, बट अगर तुम रेशियो निकालो then this number is 100 times bigger. 0.136 is much bigger than your 0.006. So probability of y and probability of n. So probability of y is bigger than probability of n. So what I'll do, I will, Mr. A loan is approved. Yes, tell me. Yes, someone was saying something. Please go ahead. Amol. Amol, you were asking some question. Tell me, what's your question? No, sir. Mr. A's loan is approved. Now, one more thing which you need to keep in mind is, guys, if I add these two numbers, do I get 1? क्या मुझे को 1 आ जाएगा? अरे इतना टाइम क्यों ले रहे हो? डायरेक्टली बोला ना, नहीं आएगा, दूर दूर नहीं आएगा. 1 तो थोड़ा 0.2 भी नहीं होगा आंसर, ठीक है ना? So if you add these two numbers, will you get answer as 1? Answer is no, you will not get 1. So that is why, remember, I am saying you need to calculate the probability of n and y separately. So now suppose, let's say, if you calculate the probability of y and it comes out to be 0.136, then you cannot say that probability of 1 would be 1 minus 0.136. This statement is a wrong statement. But this statement, in logistic regression, probabilities add up to 1, but in conditional, they will not add up to 1. तो दोनों की अलग से निकलेगी, फिर कंपेयर होगा, ठीक है? Probabilities may not add up to 1. Okay. इतना सबको समझ में आया? See, coding part is very easy. Coding part again using our SQL, and it is just one line of code. Now, अब एक last चीज. Again, this what I'm going to discuss is probably तुम्हें कोई बताएगा नहीं, but in naive Bayes, ये नेव का मतलब क्या है? वैसे नेव का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? सीधा साधा, अच्छा जाए गूगल सर्च करो, देखो. नेव मतलब न्यू, कम यूज होना, नाइव बेस. देखो, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ जजमेंट ना. तो तुम एक ऐसा मॉडल क्यों यूज करना चाहते हो जो लैक करता है विजडम में, जो जजमेंट में भी लैक करता है? सो नाइव बेस हैज वन ड्रॉबैक, और ये ड्रॉबैक इतना खतरनाक है कि 99% ऑफ द टाइम ये मॉडल यूज ही नहीं होगा, ठीक है? इट हैज वन ड्रॉबैक, and that's why it is not frequently used.
So with each algorithm, I am telling you its drawback also. फिर तुम, you as a person, as a data scientist, need to think, I am going to use this algorithm. What kind of challenges can I face? ठीक है? But ऐसा भी नहीं कि इसका कोई यूज नहीं है. So naive Bayes during some situations it gives best results. हम वो भी देखेंगे कि कहाँ पे ये best result दे सकता है. So in those scenarios, probably naive Bayes should be your first choice. In rest of the places, it should be avoided. अच्छा, चलो. Let's see the drawback of naive Bayes. If you are using the naive Bayes, what kind of drawback or problems you may be getting? Okay. Suppose करो. Guys, इस डेटा को जब देखो ध्यान से. Suppose all these are your x1, x2, x3, x4, x5, x6, and obviously this is your target variable. What are my x variable? Your age, work experience, income, saving, whether you have your own house, whether you have your own car, whatever, right? So bank is trying to approve your loan based upon these 6 parameters. कोई problem दिखता है? Any problem do you notice? If bank is using these parameters to approve your loan. जो नहीं है उस छोड़ो, जो है उसकी बात करो. Work experience. So what's the problem? Age, work experience, income, saving, own house, own car. And then your target variable is loan status. You have 2 things, either loan would be approved or rejected. क्या है प्रॉब्लम? होम का इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा. क्यों इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा? हैं? कार है, own house है. So bank is trying to see how much money you have or how much money if I give you a loan. अगर मैं तुम्हें लोन देता हूँ तो तुम्हारा मॉर्गेज क्या होगा? तुम्हारे पास घर है तो तुम्हारा घर बेच के पैसा वसूल लेगा. तुम्हारे पास कार है, तुम्हारी कार लेके पैसा वसूल लेगा. राइट? लोन लेके तो देखो और फिर ना चुकाओ. मैं पता है नॉर्मली पॉलिटिशियन और ये पुलिस वालों को लोन बैंक बहुत मुश्किल से देता है. वसूलना मुश्किल है उनसे. नहीं दे रहे हैं, मैं क्या कर लूंगा? कोर्ट में जाओ. जो नॉर्मल आदमी उसका मकान सीज कर देगा, कार उठा ले जाएगा. अच्छा चलो, जोक्स अपार्ट, स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम योर डेटा साइंटिस्ट aspect. If I am using these variables to predict my loan status, what kind of problem you are entering as a data scientist? And think from your naive Bayes perspective. अभी जो फॉर्मूला यूज किया है ना, उसको जरा निकाल के देखो.
Okay. एज है, वर्क एक्सपीरियंस है, इनकम है, सेविंग है, ओन हाउस, ओन कार, लोन स्टेटस. अच्छा, बिफोर आई कम बैक टू दिस थिंग, आई थिंक लोगों ने सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट को तो देखा, लेकिन कैलकुलेशन का डेप्थ कुछ शायद नहीं देखा. सो basically when I said this thing, let me say self-employed, when I found the probability between self-employed and loan status, was there any role of gender? क्या जेंडर का कोई रोल था when I was finding the relationship between my self-employed and loan status? Answer is no. When I was checking the relationship between property area and loan status, was there any role of credit history or self-employed or dependent or gender? No, right? मैंने सिर्फ इतना देखा, I checked how many loans were urban and how many of them were why. There was no role of the other column. So basically, when I am finding the probability between my work experience and my loan status, I am not considering any other factor. I am neither using age, neither income, neither saving, neither own house, neither own car. Similarly, when I will build the relationship between my own house and loan status, I will not use any other parameter. इतना चीज समझ में आ रही है? So when you are building the relationship between your own house and loan status, you are neither using age, neither work experience, neither income, neither saving, neither anything in the formula. Formula में तो use नहीं कर रहा, but in real life the connection is existing. Real life में तो connection है ना. Normally own house उसी के पास होगा जिसकी age थोड़ी ज्यादा होगी, जिसने at least 2-4 साल काम किया होगा, उसी के पास own house आएगा. जिसकी आज नौकरी लगी उसके पास हाउस कहाँ से आएगा? अपना ओन हाउस, खानदानी हाउस की बात नहीं करो. एंड जिसकी एज ज्यादा होगी, इफ योर एज इज मोर, वर्क एक्सपीरियंस इज मोर, इनकम इज मोर, देन ओनली योर सेविंग वुड बी मोर. द पर्सन हु हैज जस्ट जॉइन्ड द जॉब, उसकी क्या ही सेविंग होगी? सब तो खाने पीने में चला जाए. राइट नाउ व्हेन यू आर यूजिंग योर नेव बायस, यू आर यूजिंग PA by B and you are not considering any other variable C, D, E and F. You are using only these two ना, बाकी तो कोई यूज नहीं हो रहा. But do you notice if your age is more, probably your work experience is also more. And if age and work experience are more, chances of income are also more. And if age is more, you are doing job from last 10 years, then chances of saving are also more. And chances of owning your house is also more. And chances of owning a car would also be more. So don't you notice that this model, if you are using these variables to predict your loan status, this model would be biased towards the person who are having more age. जिनकी एज ज्यादा होगी उन सबके बाकी सारे पैरामीटर्स भी ज्यादा होंगे. And do you notice how did I find the probability? For finding the probability, I have multiplied the random probability into, then I would have multiplied your probability of age and loan status, work experience and loan status, income and loan status. Remember? So if your age is more, your work experience, income, all these things will keep on increasing and model will give a very high score for age. तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसका वो लोन अप्रूव करना स्टार्ट कर देगा, और जिसकी एज कम होगी उसका लोन रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा. तो जो नया नौकरी वाला है उसको तो लोन मिलेगा ही नहीं. So do you notice it is, your model would be biased towards certain factors. Are you getting my point? मॉडल बायस्ड होता हुआ चला जाएगा. एज ज्यादा है, वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है, बाकी सारी चीजें भी अच्छी होंगी, लोन अप्रूव करता जाएगा. तो बेसिकली होगा क्या, गरीब आदमी को गरीब और अमीर को अमीर कर देगा. बिकॉज सी इफ योर व्हाट इट विल डू, इट विल, द पर्सन हु इज ऑफ लेस एज, his chances of probability or his probability of loan approval would be less. And if probability is less, then bank will give you loan at the higher interest. अगर रिजेक्ट नहीं भी करेगा तो वो बोलेगा तुम्हारी प्रोबेबिलिटी लेस है,
Instead of giving you loan at 7%, I will give you at 9%. तो वो बेचारा गरीब आदमी अभी अभी नौकरी हुई है, लोन भी महंगा मिलेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना. So that is why your naive Bayes is not a very good technique to use. अब अगर कोई naive Bayes पूछेगा ना what is the problem, तो प्लीज ऐसा एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करना जो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है. अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सप्लेन. So basically the problem is naive Bayes. In naive Bayes you are checking one variable at a time. दो lines लिखो please. In naive Bayes you are checking one x variable at a time, but that x variable may already be a function of another x variable. That x variable may already be a function of another x variable, and then you take this example. In naive Bayes, we are using only one x variable at a time, but that x variable may already be a function of another x variable, and that x variable may already be a function of another x variable. इसको कुछ ऐसा नॉर्मल समझो. सपोज यू आर कंपेयरिंग टू पीपल, वन इज अ बिलियनियर एंड वन इज अ पुअर पर्सन. सो इफ यू मेजर द इनकम, सेविंग, कार, ज्वेलरी, कितने पैरामीटर करो, सब में उस अमीर वाले को टिक आता जाएगा, गरीब वाले को क्रॉस होता जाएगा, राइट? बिकॉज ऑल दोस पैरामीटर्स आर इन अ वे सेम पैरामीटर्स. ठीक है. So that is a problem of your naive Bayes. It considers only one x variable at a time, but that x variable may already be a function of another x variable. समझ में आ रहा है सबको? What is the problem of naive Bayes, and that is why naive Bayes is used not that frequently. Now the question comes कि naive Bayes कहाँ पे use करना चाहिए? सिक्का खोटा है लेकिन कभी कभी चलेगा, जब चलेगा तो बहुत चलेगा. So naive Bayes are very powerful in sentiment analysis. They are very powerful in sentiment analysis. Trust me, they are very powerful. जब हम लोग NLP करेंगे, we'll do an NLP, we'll do a sentiment analysis, probably you'll see. They'll give you very powerful result. Now the question is why? How? Suppose करो sentiment analysis समझ में आ रहा है? Whether sentiment is positive or negative. Suppose you are giving a feedback. So let me say you have bought a product from Amazon, and then you are giving the feedback. Okay. So तुमने feedback दे रहा and you said that product was not good and packing was destroyed, or packing was damaged. Let me say packing damaged. So what do you think? Is it a positive sentiment or a negative sentiment? Negative है, गुस्सा है customer, but कैसे पता चला ये negative? सेंटेंस पढ़ के बताओ. प्रोडक्ट मैंने दिखाया क्या? मैंने तो सेंटेंस लिखा है. ऐसे कौन से वर्ड है जो बता रहा है कि ये नेगेटिव सेंटीमेंट है? नॉट है, डैमेज्ड है. लेट मी से प्रोडक्ट वाज ऑसम एंड इट वाज ब्यूटीफुली पैक्ड. बहुत खुश है कस्टमर, ब्यूटीफुली पैक्ड. अब क्या हो रहा है? Now compare this sentence. Product was awesome and packing was
गुड। इस सेंटेंस को जरा एक दूसरे सेंटेंस से कंपेयर करो। प्रोडक्ट वाज ऑसम। लेट मी से सेंटेंस ए, सेंटेंस बी, दोनों पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं, बट विच वन इज मोर पॉजिटिव? व्हाई? तुम सबके आंसर सही है, बट क्यों? बस वहीं पे 9 प्लस लगा लो। बिकॉज in the statement A, person doesn't stop as awesome, ये थोड़ा और जाके good बोलता है, awesome भी बोलता है, good भी बोलता है, and then let me say he doesn't stop over there and he says packaging was very beautiful. तो अब ये beautiful, good, awesome ये सारे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं ना, they are pointing in the same direction, that product, that sentiment is a positive. And let me say if you are not happy with the product, तो तुम्हें उस प्रोडक्ट में सारी बुराइयां दिखने लगेंगी। तो you will say product was bad, it was not cost effective, it was not delivered on time, and delivery boy did not deliver in whatever. तुम एक 4-6 सेंटेंस लिखोगे। So do you notice when you are giving a positive feedback or a negative feedback, the presence of these words, what are these words जिनको मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूं? Can I say presence of these words are increasing the conditional probability that your sentiment is a positive sentiment? जितने ज्यादा ऐसे वर्ड आते जाएंगे, probability of being a positive sentiment will keep on increasing. And if these type of words keep on coming, bad or whatever, the probability of negative sentiment will keep on increasing. इसको एक और एग्जांपल से समझो, which we will do it also. कभी तुमने ऐसा सुना है स्पैम ईमेल? स्पैम ईमेल होता है ना, which normally go to your spam folder. चेक करना, अपने जीमेल में भी होगा, बहुत सारे ईमेल्स वहां पे चले जाएंगे. So what type of emails are known as the spam email? Normally spam emails में क्या क्या चीजें होंगी? Advertisement होंगे. So probably can I say it would be using the words like your free word. तुम्हें कोई फ्री गिफ्ट देने की कोशिश करेगा वो, हो सकता है वो तुम्हें कुछ फ्री मूवी टिकट देने की कोशिश करे, या तुम्हें वो कुछ लॉटरी बेचने की कोशिश करे, फ्री मूवी टिकट, फ्री लॉटरी टिकट, ठीक है, लास्ट चांस टू गेट द प्रोडक्ट व्हाटएवर, ऐसा कुछ लिखा रहेगा ना ईमेल्स में, राइट? सो इन मोस्ट ऑफ द ईमेल्स यू वुड बी गेटिंग दिस वर्ड फ्री, गिफ्ट, मूवी टिकट, लॉटरी, लास्ट चांस और व्हाटएवर, राइट? So all these words, so let's say there are 1,000 spam emails. In 1,000 spam emails, all these words might be present. In some emails, all the words may be present. In some emails, few words might be present. But do you notice these words are increasing the conditional probability that it is a spam email. Now suppose if it is not a spam email, suppose you are working in an office. You are working in an office in a company. तुम्हारी company का नाम है ABC. If a mail is coming from abc.com, then obviously this email is not a spam email because तुम्हारे ऑफिस के अंदर से ही आती है. Suppose bro उत्कर्षा तुम्हें अगर ईमेल भेजती है, तो chances of being that a spam is very less because Imarticus से उत्कर्षा @imarticus.com से आ रही है. So if email is coming from imarticus.com, the chance of that being a spam is automatically ruled out. So do you notice presence of @imarticus.com has increased the conditional probability that email is not a spam email. So in this scenario, are you noticing? The naive Bayes will give you good results. It will increase or decrease the conditional probability. ठीक है? So इसको note down कर लो that in sentiment analysis, your naive Bayes might give you good results. And I think that's it from my side for today. Tomorrow when we'll meet, we'll do the coding. So कल का टाइम क्या दिया मैंने? What's the time for tomorrow? 8:30. So 8:30 sharp, let's start.
Okay, guys. So thank you for joining.